नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय स्ट्रीम। कदम कदम Maintaining that range, maintaining that gap. Shuts one down. Oh, black hole. Wall bank shot onto 2x कर दो भाई, 2x already low and rock. 2x करूं? Spins out that sober duel. To not let it go to a 1v1 and secures the fourth one for Uzi as well. Aww. All round, they were not isolating any of these fights by themselves. They were playing it together as a team, and that's exactly what they went up against. True Rippers, they were having that issue where they were taking a lot of out in their situation whatsoever. Now पीछे तू देख हो गया and hopefully that will continue throughout the rest of मैच की this देख रहे थे? matchup because don't forget वॉच पार्टी they're really good. वॉच पार्टी कर किसके साथ रहे तू अकेला तुम लोग के साथ। ऐसा थोड़ी होता है अरे अच्छे किसके स्ट्रीमर साथ लोग जाओ? पकड़ने का और फिर वैसा करने का वॉच पार्टी वो होता किसको है लूं? तेरे जो भी नॉन स्ट्रीमर्स ये- रहते हैं वो लोग के साथ हो ना तुम लोग? Where's your backup? तो यही I understand that you want to draw, but you need someone with you, right? Getting a little too ahead of himself probably and getting punished for that. So of course, not a very solid move, but नमस्कार मुशिवा, नमस्कार। Hunter's Fury, locked down all three of the utilities. All they need to do is just try and find where that actually is. Oui. Enemy killjoy. मेडल नो ड्यूलिस्ट खेल रही है। The other side, though, free control is the name of the game. As the knife goes out, scanning anyone who's up close. That need Triple initiate. for some time while the rotation comes out. भाई ब्रूनो मार्स क्या क्रेजी है भाई। In the main, knife मतलब वो क्या एकदम स्मूथ है वो। coming in their favor, but wins. मेरे से अरे ये क्या आ गया है? ये देखो ये शॉट्स देखो Comes out from KO. That to right from the CT. एकदम एफर्टलेस है भाई। ये देखा आज ही देखा तुम समझ रहे हो? विम ने और डाला। आइस मर गया। वॉच पार्टी तो है वे विप ने एक और डाला। बॉबीडॉन अरे पहली बार कर रहा है यार, जरा समझ रहा है। हाँ नहीं अच्छा है, एनकरेज कर रहा हूँ मैं तो तेरे को साले। ये देख कोच हैकर, क्या सीन। Going in for those shock darts, he knows that Wimp was fired up. अबे अकेला क्यों आया आगे? दो लोग मार्केट देख रहे थे इसका। Yeah, the way that they played this one through, they already knew the angles that they ये wanted तो to ठीक है अभी के गाने पूरा आज से पहले गाने बहुत प्यारे हैं anchor this man can be if you allow him to. तो मैंने उसका बहुत पहले गाना है द लॉक्ड आउट ऑफ हेवन, सुना है क्या? हाँ वो हाँ सुना है। तो इसका मैंने टुमारोलैंड में वो सुना था रीमिक्स, बट जब ओरिजिनल सुना तो वो और भी प्यारा था। ओरिजिनल क्या होता है? राकेश ओरिजिनल मेडल हैकर और पुत्र ओरिजिनल ले आ। वो पिज्जा में ऑर्गेनो डाल दे और गानों हेलो किमे, व्हाट्स अप, वेलकम टू स्ट्रीम। साथ में जी खत्म। वो भी अच्छा है। और दोस्तों लाइक करो फटाफट स्ट्रीम। वे यू आर जस्ट द वे यू आर ना जस्ट द लाइक जब वो आया तब मुझे कॉलेज में थे। हाँ मैं सबको ऐसा सुना रहा था, कोई सुना ही नहीं फिर पब्लिक गोविंदा क्या के बड़ी नहीं थी अपनी, क्या ही बोलेंगे ये सब। तो यार गोविंद आचरण में मैं उतना पुराना है क्या? रास्ते से जा रहा था आहा जा रहा था। इन लोग तो पैदा भी नहीं हुआ रहेगा ना तब। हैं। एक्सेप्ट कर लो गाइस, एक्सेप्ट कर लो। अरे टोरकी भाई सेटअप चेंज कर लिया लोगों ने। क्या तीती कर रहा है भाई, उसको बुला भाई तीती। ओके इनके पास 5 अल्ट है भाई। They've also put the lockdown as well in that place, and you can see even the Hunter's Fury have User joined your channel. that lockdown that because the spike is nowhere to be found. अरे अरे तेरा भाई ब्राउलर के साथ बोल रहा था उसके बदले एक प्लेयर चाहिए था, पूछ ले उसको। बस्टर भाई आरएससीएस टू बस्टर ए बस्टर केजे का अल्ट फेंक किए लोग। स्ट्रोकी को हटा दूं क्या? अरे नहीं वो जाने में था रे, पूछ रहा था कि कोई है तो बुला लो, और फिर उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया। फटक से इनवाइट करो, स्टीम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओए बस्टर गेमिंग हां आजा
नहीं नहीं space. They've got no utilities to work with apart from एंजॉय कर तू alarm clock across mine. They just need Okay, to किस पे clear up अभिषेक चौहान आई नहीं रहा इनवाइट make sure no one pushes किया in ब्रदर from market at least. But this नहीं is आ a रहा site है they've got to ये commit on. किसी का भी लॉबी ज्वाइन कर ले राज या खत्म Yet खत्म again winning his trades out. Blackhawk with a ओपन drop करना on पार्टी पार्टी ओपन ही है and he's ब्रदर just मेरे को absolutely एडवर्टाइजमेंट का perfect असाइनमेंट creating क्यों लिखने नहीं space हो दो रहा है around. There it is. अभी चेक लिखने दो कर धन्यवाद क्या Everything. हाँ अभी ओपन हुआ Sound muted. In the meantime, though, we'll just have to see how OG are going to adjust to this adaptation, right? Because they have to take care of Wimps at this point. Because he's been doing an amazing job on that killjoy, at least on this defense. Yes, with the triple initiator, you would also... हाँ मिड ही उतरे सीधा Spray down is good enough. तो मिड प्रेजेंस दिखा रहे तो और भेंडी How is raw fuel getting 3 before getting shut down? How did that even happen in the first ए पे place? घुस That's गए the question. Just raw fuel doing raw fuel things. Do you need to question this? The thing is, I don't even there think is so. DM King, and then there is raw fuel. It's like two quantities that you just do not question. They exist in this plane of reality just to defy the laws of physics and the laws of Valorant at the same time. This is just one of those scenarios. कुछ But भी नहीं with the लगा position इसने तो coming in from Paradox, there's a good chance he's gonna be able to get away with something too. ऑब्वियस अरे बाप रे It's Paradox. The angles are pretty good, and I don't think they're gonna expect him to be that Ah. in. But Ozzy's he's ready with his gun. 2-6 on the scorecards as OG. They're pretty much ready for this fight. Hacker already used the pause, so you can just wait and see what his team is gonna do. मेरे बुकार के He's वजह से quite happy on his मेरे में own ताकत ही words. नहीं रही इसलिए बोली Doing pretty वाओ well, so he doesn't need to say much सही because है overall, the members of OG दिख रहा है ना सबको really सही से agreed on what is really कैम going on लेफ्ट in this राइट map. कुछ करना है But overall, some over-aggressive peaks coming in from OG, they are being मेरे को लग रहा है ये punished, सही but है कैम Raw with his individual talent, if he's able to get 3 players there, I don't know what else to say. You had 3 players looking at him, but Raw still gets those kills. अरे That's just tough. It's But- just like how, you know, in the previous round where they were selling the fake towards the A side with the Killjoy lockdown and Aziz was the only one posted in the site, yet he somehow managed to get 2 किसी of को them. पता नहीं चलना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ टीम के साथ Coming in. समझ रहे हो It kind of लिप सिंक से भी समझना नहीं चाहिए wherein Raw Fuel, even though they knew that he was there, they were checking the angle. It was just that he was getting one peek after ये the तो टेक पॉज है another. ना It wasn't इसमें like तो बोल भी नहीं both सकता or वो all 3 of them peeked him at the exact same time. No, it was just one after the other, then after the other. So it was a very solid, I would say, setup for him coming in. Nonetheless, 6-2. And और 3 एकदम rifles तेज to वो work ऐसे भी with. कुछ बोला Spectre तो as घंटा well as a समझने वाला है sheriff. क्यों भाई वो बोला वो इंग्लिश में ही बोलेगा ना Definitely try and make वो अगर something कुछ happen बोलेगा in इनको this कैसे round. समझ में आएगा Because even if you look at the composition, right? Yes, you mentioned about the 3 initiators having a lot of utility usage, especially the ones that can, you know, regenerate as well. Now, the main ये thing लोग ने about this स्टार्ट में कुछ composition लेना is that there चाहिए is यार absolutely no duelist. So एमिन once वीमेन you कुछ go तो onto कंट्रोल that लेना मांगता है attacking half, डिफॉल्ट तोड़ना you मांगता know है there's इनका no one who could get the crosshairs of Orangutan away from those choke वो points. लोग भी होशियार है So no matter रुके how much वो लोग utility मिड you be दिखा able रहे to तो dump there, I don't even think so that if there are a couple of people playing at the backside with some kind of cross setup, they'll even budge even an inch. Yeah, there are a couple of flashes that you can work with of the KO, but Fade's Prowlers, they're not flash, you know, they are just ones that can clear up those close corners. So you've literally got 2 flashes to work with for your entire site वी execute. पे गैदर And that is something I personally feel is very problematic for Medal whenever it comes to their composition on the attacking side. To a certain extent, I do agree on that, but think about it this way, Scared, that when you have so much utility, you're supposed to use it with proper synergy, right? लोग को You समझ throw in गया the है flash, you भी throw in the होने वाला prowler है right behind it, so anyone who साइड is जाके flash, they खेलते can't हैं easily break the prowler anymore. They get nearsighted, allowing you to run in towards the side for free. Then you have the shock darts as well to just systematically slow players down, but we're going to ये be टाइम talking about नहीं है that later यार because it seems as though the execution is going to be coming through. It's the स्पॉटेड last नाइस 30-second execution, so it has a big chance of pulling apart. too. But Wimp, he's not going to be able to find the second frag off. And Excali, he does get the plan more than ample amounts of time.
And overall, OG, they're still winning out on this. One tap got Ooh. at like 5 HP. He has almost nothing to give in towards this. One player has been spotted as Frostmines. He's hoping for maybe a swing of his own. Excali got for a kill, and Frostmines just swings out to find the काली final बोलते frag. हैं। OG, that was a very dangerous round for them to play into. 30 seconds left on the clock, and they went in for the अभी execute. डैम And क्या if अभी Antec दमशराज just थोड़ी if Wimp was able to find that second frag over onto the player on Speedway and Excali died, this round was all but over. True. Absolutely true. Because yes, you mentioned that there was ample time in the spike plant, but there was literally not. It was 1 point something seconds भाई when the क्या spike है was planted. So कोच करके the इधर सिटी second, दी है। craziest play in this round आप came when प्रोफेशनल है एकदम one tap प्रोडक्शन। got literally peeked onto a Killjoy turret at 5 HP. He would have whipped one shot, one shooting error, and that's it for him. That too with the Killjoy turret. So that was the riskiest play किसके that I साथ would say was किसी in को this तो round. साथ में लेके But बैठना nonetheless, चाहिए। yes, if you're looking at it in that direction, OG this time with a very slow round indeed, and still somehow making it work for themselves, could have gone other side with that Wims one extra kill. So could have changed a lot of things in the previous round, but nonetheless, it is still OG winning, and that too on their attack. We've been discussing time and time again how Ascent is such a defense-centric map, and when you're running a triple initiator comp, you should have enough utility usage to probably even try and stop the execute at those choke points. But nonetheless, yes, you know, पैरों को अभी initiators are समझना best चाहिए। used whenever you're going in for those अपन एक attacking साइड paths. कुछ तो लेना मांगता है अभी। Still, I think yes, the combo of the डिफॉल्ट flash तोड़ो। prowler would work. That you can throw that pop flash in, and then the prowler could go and clear those angles, and no one would be able to break them. That is something that can definitely happen, but they've absolutely got no one to capitalize onto that space. So they would probably have to either invest their Killjoy or their Astra for ये pushing टॉप मिड in पे आलम बोट towards those लगाएगा। sites. So that's one thing that they would have to do, and neither of them have that ability wherein they can just quickly clear out फास्ट a ले रहे space, शायद। quickly clear out an angle or anything like that. Plus, when you look at it, Sova has got to stand at a safe place while he's throwing his ये recons, कूद while खड़ा he's रहेगा। throwing his shocks. Astra also needs to क्या stay को देख put. क्या If बोल he रहे is हो? able और to वीफ्लेक्स start क्या his सीन? when he फास्ट plays का with सीन है ease शायद। in the Cosmic form, हाय हाय they've 4 also got a लोग स्पॉट Killjoy पे। whose basic job would be to check for the backstab. So who is basically going to push the side? It again comes down to KO as well as Fade. So they've got to dump the utilities, and then they've got to go for the execute themselves. That will give some शॉर्ट crucial स्प्लिट। seconds to OG, so that if they're easily able to try and play for that anti-flash, they would have more than sufficient time to actually get back in it. For now, Untap God does not realize how far has come forward. Welcomed by a headshot, and that's already a pick in favor of Orangutan. That's a huge kill for them too here, because Metal for now, they are in the most horrible of positions. And Aziz, how aware is this guy? I don't really understand. Aziz from yesterday and Aziz now. आवेर था वो एंगल पे कोई तो खेल रहा रहेगा करके मिड पे आलम बोट नहीं है तो। He is not gonna whip a single shot. He's gonna make sure that ये क्या हुआ? अरे यार टाइमिंग पे ऐसा क्यों होता है भाई? ये मेरा गया सबका गया भाई। his team heads Marshall as he takes it down over to a 2v2. The last two players अरे still बीच का alive, गया but सब they need to get this दिखा ही fight नहीं। down soon. प्रोडक्शन Frostbite गलती। gets the perfect timing, gets the catch over on a one. देखो देखो ऐसा लग रहा है कि जल्दी Very खत्म low करोगे। HP, and now Blackhawk. This round is very much winnable. He just needs to hit his shots. He doesn't have a weapon, but he's not gonna need it completely. We'll be able to pick one up, I do believe, as Blackhawk. He's gonna make a full-on run around, but with the Hunter's Fury still online, this retake is gonna be very difficult unless दोनों लो है रे। OG make a massive mistake and peek into him. And he's got so many angles to clear out at this point, so of course it's going to be very problematic for Blackhawk. And he's basically going to clear the entirety of that site, and then there's also this problem of a lurk play. That's going to be the Hunter's Fury being committed. He gets actually tagged up. That is going to be a good pay for fuel. Dude, the turret it tagged wasn't him a- so he couldn't move. He couldn't move because of the turret. Turret So की he वजह got से tagged slow in हो the गया। first one, he tried to run away. Like you can see it, right? The turret, man. टर्रेट की वजह से स्लो हो गया वो। Because of those turret bullets, and also, I think so. It was still a little bit risky to stay put there. Yes, I understand you want to get the half diffuse in, so that you have a lot of leeway to work with, but it is a Sova that we're talking about.
one good judgment and you're basically good as dead because you don't have any jet or rays or neon mobility to dodge that second shot. Problematic, but still OG winning their 8th round as well. So 8-2 is the score as of now. We're jumping in the 11th round and aggressive. It just seems that OG are playing with such a great passive aggression that they're making use of every single piece of the सब लोग ट्राई कर utility रहे, that सब they have कुछ to ट्राई do, कर रहे हैं every लोग single कि वो angle, अल्ट and it's करके just as you mentioned, this किल from जगह सेटअप yesterday हर is एक जगह entirely पे. different from what we are seeing right now. Yeah. That loss up against True Ripper seems to have really awoken the fighting spirit in the team once again. And they're bringing in their 100%, but you can tell that they're not really going in for risky strategies. They're taking their time for a lot of these executions and they're playing it smart. And this is the strength of OG that we kind of forgot about. Yeah. And once more, it seems the SE could be on the firing line for a lot of damage here. Blackhawk can't even really utilize the utility to try and save himself. Over from one side, one tap, that's gonna be ऐसा gone for आता ही रही multiple है. kills. He's gonna be running and gunning it down. Gets multiple, and he's still able to survive this. Now Nice it's all रे. up to Scallion, maybe find one more frag. He's not gonna be able to get पता है it. अभी साइट ही Rasper है. in towards the side. His position's already revealed. He is now known. Swings out, and it's all gonna be up to Antidote to maybe pull off a miracle and a half here. Paradox over to भाई the चा गावात the paranoia actually hits गए राउंड. this is massive. It's gonna be good for the ओए good for the second as well. Antidote. एंटीदा From this man is just phenomenal. A masterclass when it मस्त comes खेला to भाई. these Omen plays. That paranoia hitting two players should not have happened. But it's Antidote. He knows how to play. The years of experience working for him. Good God, OG. मस्त खेला एक It नंबर. seems as though it's written in the stars that they should win this map. There's nothing that can stop them after this clutch. It was just this one split second decision, right? Wherein क्यों पिक Paradox किया गोपी ने? decided that he टाइम got नहीं था. G, it seems as though it's written in the stars that they should win this map. There's nothing that can stop them after this clutch. It was just कर this लेने हैं one फटक से. split second साइड भी decision, जाता right? तो भी हो Wherein जाता. Paradox decided that he wants to go for a flash play, and that was a perfect timing Antidote would have gotten to get that 1v1 and win it. He did it, and after that was just his mad Omen play with a perfect paranoia onto two people, reposition. And that's going to be him again finding the opener in this round. So easy, being shut down. And I think so, middle, they're already down to their broken by at this point. So they've just forced a few guns here and there. It's Blackhawk though with the Vandal. कैसा है क्या शातिर भाई? अच्छा विफ्लेक्स का नाम. सिनर्जी तो है. क्या लगता है कौन जीतेगा? फर्स्ट मैप तो ओजी का ही है रे. And now regrouping towards the B where we already see a stack coming in. Two people playing in the crossfire. That's one tap got just ready with his knife. Probably goes in for that. It is basically tagged in. चार जन का two इन्फो है. players. There three, maybe all four have been tagged और up. So देख the ये game रोटेशन. is already over. Null command being used up as well. They've got the hunters. किधर? What is that nasty reposition and Chaos got the spike, so it is going to make way towards the A side. ये Now भी there's गया. no one anchoring it, no mid control whatsoever. Cat has been taken by raw fuel now as he picks off Paradox. So that's gonna be Hunter's Fury used up to try and probably deny the spike, but that's one tag he was able to get. Could not convert it into a pick. 10 more मुश्किल है seconds. 10 to ये Spike तो. on site. Now the plant will also Mid go से आ रहा है down. 16. No major problems. All 5 standing. OG मुश्किल है भाई ये राउंड तो. Antidote gets another 3k. This guy. रिंग लाइट बंद है क्या? हाँ बंद है रिंग लाइट. अंधेरा आ रहा है क्या? He single-handedly took this entire round. He cleared out the entire. अरे वो पीछे का लाइट चालू है ना मेन लाइट, इसके लिए अंधेरा आ रहा है. No one helped him. Absolutely no अभी one. मैं क्लोज हो जाऊंगा तो अंधेरा चला जाएगा. He swung out, killed Ezzy. Yeah, he swung out, killed Ezzy. All of his other players were running it towards mid, making noise, right? Wim walked हाँ तू into डल his दिख crossfire रहा. vicinity. हाँ वही Because क्लोज of the repositioning. पीछे गया तो ऐसा होगा वो. तो बंद करना, खुद पे डाल लाइट. ठीक है. Just as good as you see from Let's, from Loud, or maybe even Crashies and Marv from previously Optic, now NRG. So that's a very solid play coming in, and nonetheless 10-2 half on ascent attack. अभी
That's not something you would expect or would happen, but nonetheless, it's going to be middle this time. Moving their way, creeping towards the A side, made a lot of noise, had the control, takes the orb and backs off. So trying to play strategic, trying to get those ultimates up as quickly as possible. Now our वो देख कैसा स्मोक करके मिल लिया उसने शॉट आ रहे तो it will be split. अरे So Paradox ऊपर चढ़ा था also moving in now with his team as easy quickly gets a pick on Antidote. That's gonna be one tap god jumping, running and gunning as Paradox gets the pick on Aziz. Though his HP is भी राउंड जा सकता है भाई अरे 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 फोड़ दिया उसको तो स्पैम में not going to survive whatsoever. Paradox gets his second one, was not able to scan any. Raw Fuel gets one headshot onto him, and it's down to a 2v4 situation. It seems just way too difficult for OG as of now. Because they're not even together. Can probably group up on tree, but the door is closed. And Frostmine's position has been noted. Spray down is there. But he just does not want to directly commit onto this fight. Oh, wait. Raw जा Fuel. सकता है अरे No way! It's चलो doable! ये राउंड तो जीत गए लोग Doable! No, he doesn't have time. Even if he gets the kills here, he will not have enough time to go in for a play like this. Maybe get the kill. Yep, Frostmines is gonna be able to shut everyone down. पैर के साथ तो क्या गेम हो गया It's just so good. And at the end of the day, even though they were not Ay, able to और get रोशनी the वैसे उसका हिट नहीं दिखा एंटी I को think overall, the members of OG, Torch. they're happy with the outcome. They get 2 kills on their Killjoy, 3 kills on their Sova, so that's 3 ultimate points being given over to a Sova and 2 to the Killjoy. That basically results in the Hunter's Fury and the Lockdown coming online a lot earlier. You need to have those abilities ready when you're on the defensive side, especially against a triple initiator composition. The faster you charge your ultimates, the more you're हाँ भी गोरा दिख रहा है and stop the Sova from getting प्रोफेशनल down. स्ट्रीमर अरे कि This मैं is काय very काला important गोरा करता है वही at the तो end of the भाई day. हम काले हैं तो क्या Start हुआ of the दिल round, वाले one हैं out on the हाँ economy. मिट्टू भी So let's see how they play this eco, because at the end of the day, it's तीन gonna be लोग hard बी to पे win. मैंने But कंट्रोल you're लिया able है to deal damage in the form of 3 or 4 weapons. Ooh, boy, metal. They're in for a world वापिस of शॉट लगा ही था वापिस शॉट Couldn't deny that at all, as this time they've shown mid presence early on. So that's Reload, second अरे, time अरे, middle अरे। has shown presence towards one side. Moving पकड़ेगा ही शायद इजी an को entirely different situation where they want to go Ah, tree, but पकड़ लिया his position. Okay, all right, it was expected. Easy quickly gets a shutdown onto him as Paradox was also able to clear out Antidote on site. Not quite sure where they wanted to land that seize on, but either ways, there's not like this I need to know that anyone line coming up close and personal. Yeah, just a little off. Nonetheless, this should be a very easy round for Middle Esports now, since they've already got मिट्टू भी क्या बोल रहे हो classics to work with. They've got the plant down, doors मिट्टू भी full भाई closed, they've got entire long control, tree control. Not the tree actually, but the site. बाप रे खतरनाक है वो That's a very good Recon? lineup of Horn though. Yeah, विन वाले भी स्पॉट शॉट वाले भी स्पॉट a really good Yeah. lineup coming through. That's gonna give a good chunk of information as OG not really getting any kills here. They haven't invested anything, not even a couple of Easy shares by to full lead focused. these early fights. So we can see that Ezzy could Oh. be waiting for Tapan. but I think it's the other way around. Call an ambulance, but not for me. एम्बुलेंस Literally in this statement. As the last 2 players. मेडल के पास ड्यूलिस्ट नहीं है मैंने भी देखा Orangutan अभी देखा did हाँ very well ड्यूलिस्ट to नहीं उनके deny the पास ultimate economy, but overall medal, सिटी साइड ही वो लोग को they ज्यादा stood राउंड out on these 2 rounds and नहीं they यार were सिटी able to साइड win के out 3 on this इनिशिएटर है particular one very कुछ decisively. करना So, चाहिए था medal, they're पुश more than करना चाहिए happy था एक with साइड the 3 outcome. इनिशिएटर है तो 5 bonus सिटी weaponry साइड to go into वो this लोग next वो round किया to ही नहीं वो support लोग over ने economy, but economy is no longer कंटिन्यू being इन्फो ही नहीं है able to उनके win पास these rounds, and this bonus round is just as important as if you were playing a buy round. और You don't तीनों have a रिवील choice. वाले है You either win it here or you give the 11 to OG and allow them सीधा to बता pick देता है one कौन है operator. And you do not want to see Aziz on. Never mind, Yes, it's that is like true. Scally. And Too aggressive. भाई wins out at that KO duel, so that's already one good pick coming in from middle as they've got the control now. And they've been doing this for the 3rd time. 2nd in total, if you look at that. 2 times they've shown an early A main presence. Now this time they're working towards the mid. Raw Fuel quickly gets Wait, one. What? Excellent. मरने के बाद कैसे बोली लगी I want a replay of that later. Please, Manoj. That should not have happened, but alright. Alright. ये क्या हुआ Confused over that, but nonetheless, let's see how things are going to turn out onto that one as Frostmine quickly takes down Easy. So that's down to भाई ये गेम बहुत डेंजर है भाई Seems to be हेलो मिस्टर आउटप्लेस व्हाट्स अप वेलकम टू स्ट्रीम BO5 है ना तो कॉम्प एक्सपेरिमेंट चल रहा That's
going to be Antidote wrapping things up for Wim, but please. भाई वो show क्या me था the बे? play. What's Yes. this? Even I want to How see did how he hit he got this? to. I didn't even see the flick. Okay, here we go. Here we go. He got No one. way! Holy. No goddamn way! He got that flick! ऑलरेडी गोली He छुट्टी थी उसकी. turned around, shot the flick. The bullet was out of the barrel. He got headshot in the meantime. That's a But क्या since था he उतवाना? flicked- Oh my! Comeback लगता है. Ever. मुश्किल है रे. Never in my entire cast ये round में समझ जाएगा. have I seen something like that. जा रहे मिट्टू भी राइट चेक नहीं करेंगे अभी ये लोग. देख Smokes. ये देख ये देख. Oh, अरे he's भेंडी controlling the visa. क्या पिक किया उसने. Could not get anyone though. बूंदी का क्या. Motherboard had realized that there might be someone there. Raw Fuel this time still holding the angle, trying to play for the anti-flash though. It was somewhat of a crossfire setup, but it also seemed was not at the same time. Maybe Raw Fuel wanted to play a little more safe. Nonetheless, A seems to be the name of the game. Flash goes out, Prowler to clear those angles as well, while Paranoid Heaven से wrap up. lays Sheesh. one off that side take. As दो even लोग Fragment हेवन will आ go चुके away. उनके. Little do they know that everyone's going to come in from behind as both of them actually get shut down. Rock will also holding that angle. Paradox is the one still trying to get the heaven control. यार Standing, gets ये the राउंड strike. जीत सकते थे ये लोग. Astro Tucktails run away, maybe not. Can try and decide to go for a rehit. This is a 1v3 and he has to get that win. चल पैरा So, राउंड निकाल Rogue चल. will now try and take as much map control as possible and we'll try to find out where is that rotation going to land. Oh my god. It's everything has been noted. Frostmind should be able to win this one. He should get the timing perfectly right. Yep, he does. Straight up is Antic. there, and that's OG winning another one. ब्रोकन and गेम. going to हाँ ना वो 12. क्या मारा ना. Yeah, that is just a harsh one right there. Metal not really having a direction in this round. They did get the early couple of frags, but it just wasn't enough for them. Advantages are present, but at the end of the day, you just did not have it. They did not have it in them to try and close out on those rounds. And then there's Raw Fuel, man. He's been an absolute force to be reckoned with. Nothing can really stop. नेक्स्ट मैप कौन सा है. Next map Timeout has been पता नहीं taken यार to कौन सा maybe है. force out the momentum from OG, but देखते रुक जरा. I don't think we have seen the नेक्स्ट Euro मैप कौन सा है. pull off a lot of phenomenal हेवन है. points, but I don't think it's gonna be enough to ये shut मिडल down. And if just ओजी if का स्ट्रॉन्ग है रे हेवन. अबे I already told you, right, that Ascent is gonna be so impossible for them to win. भाई मेरा 6 बजे You मैच see है CS2 why. का. OG is just a different beast on this particular map. कैसे खेलेंगे क्या पता. 4 more seconds for the timeout though. Last chance for Medal to probably work a miracle out. Maybe think of something, how to break through this impenetrable defense that OG has brought onto the table. Especially how to deal with Raw Fuel. My How do you god. deal with this Sova? 23 and 8 on an initiator. Like, oh, do you know what I don't understand? Like, players like Deathmaker, Raw Fuel, they Bullet. what, Jet, right? From the very beginning. When they मेरा भी नाम लो भाई. मैंने now मेरा they're भी playing वैसा ही है. initiators and sentinels, and for some reason they're fragging out more than their own duelist stays. I will never understand how, but they're doing it over and over again. अरे अरे They're अरे riding अरे on the back भेक of ला that रहा. momentum. OG, another opportunity for them to find here. As Antidote does get spotted out, but he's gonna give away तेरा the space, सब and चीज that's pretty smart. सब One चीज thing क्लैश that क्यों he होता है. giving क्या up पता. on लाइफ ही ऐसी है भाई. what the members of Metal भगवान want. परीक्षा ले रहा है मेरी. And this hit's gonna come Ay, through. dole. Scally's hungry Ay. for a kill, but he whiffs the shot. But the trade Paisa. comes out regardless. Rockfield shuts down the smoker, and that is huge. That's a good chunk of information being gained. They already know where all of the players are. OG, now they're the ones in control. Yeah, दो and तो now रली. they're slowly working on map control as well as Aziz was able to take 5 moves down. It's down to a Vinci. 2v4 situation. Blackhawk could have equalized the numbers but failed to do so. And now on the other end, Raw Fuel Frost अकेले अकेले जाके मर रहे. It's either a full 4K or the concede in first map. क्लैश ऑफ क्लैंस. No in between. बुलेट का नाम लो. वही तो Let's see how भेंडी मेरे साथ भी वैसे ही हुआ ना. into this one as
It's a good decision though to go towards the A side as there's absolutely no one. So Blackhawk can definitely try and get the plant in. Now that would be one thing that would work in his favor, but he's got to manage 4 people who would be running at him, wherein 2 of them are already coming in from heaven. The footsteps should be heard. Raw Fuel is just basically going there without any stoppage. There we go. They find the timing, shut him down. भाई लड़के ने Now they're gonna 26 मारा है 26-8 स्कोर है इसका Yeah, that was क्या बात है GG's It is overall over, in all indeed. regards. Yeah, OG, GG they GG just didn't make any mistakes. This was their map. I don't know how else to put it, ladies and gents. Like, you could say that we are being slightly biased here, but we knew that OG was gonna win this purely in पास होने का है फिर we can see the stats that हाँ they हो are तो जाएंगे pretty भाई much unkillable on this map. It was only True Rippers that was able Scared to yet take down on this, and aggressive. that was purely on the basis of the brilliance of Deathmaker and a couple of rounds where DM got 4Ks constantly being able to turn a lot of rounds that weren't in their favor back towards True Rippers. Even then, True Rippers had a pretty tough time trying to break in to a lot of the strategies that OG were bringing on down to the table, and you could see that Metal, they struggled so hard. But that's why Haven is going to be a very instructive. मिडिल के पास सिटी साइड राउंड होता ना तो शायद क्लोज जा सकता था ये गेम सिटी साइड थोड़ा साइप हो गया 3 इनिशिएटर We know how good their Euro strategy and composition can be, but up against OG, who have already seen what the Euro is capable of from the side of Paradox, it's going to be extremely difficult for them to win that one out. Haven is pretty much their do or die. This is no longer a best of 5 anymore. It feels more like a best of 3. कोई नहीं ये वन टैप गॉड फेड क्यों खेल रहा है उनका कॉम्प है ना कुछ That is true, but since it is middle, I'm not gonna throw anything out of the window either ways because we did not expect कुछ them प्रैक्टिस to करके go आए रहेंगे वो लोग dominating win on Lotus either. बट वो लोग against को Last Army. So that is चांस one नहीं thing that मिला we can यूज do. करने का I'm also expecting them to have probably cooked up T even side more कुछ strategies because you already know, yes, in terms of best of 3, you can probably try and get ready. All right, you can probably prepare one of the maps that maybe your opponent might not have expected, but when it comes to best of 5, you should have at least 4 different maps properly prepared to make sure that you get at least 2 of them so that you can push things through in towards that 5th and final map. Nonetheless, this was first one, and we already saw some dominating gameplay coming in from OG, so they are coming back with a statement. And I think so there might be some people out there who might be getting deja vus of middle when they were in the upper bracket 2-0 directly thrown down to the lower one. Now I do not think so that is something that's going to repeat again because middle on Haven they've been looking very solid. Yes, previously Orangutan have defeated middle onto that map, but I still think the way they execute the site and the way they try and take control, the way they play around with that space, I mean I our still personally asset feel that okay they should win that out. And given the fact that one tap god will चलो finally be on his तब duelist तक back CS2 again, खेलते that's going to be a comfort role for him. We've already seen what he can do with an operator. Saw an ace yesterday. That was just an op controlling the silver. So he's definitely capable of that. Now we'll see what these players were capable of in this game as we'll have a look at the scoreboard as well. मैं बढ़िया वाओ अरे Yeah, you खुद can को ही see टैग Raw कर Fuel on 26 नशे and 8. Absolutely nothing went wrong for नशे this हुआ guy. है Full control on that initiator, nothing to really put up on the board. अबे इसका प्राइस 186 देखने है मेरे को CS, रस्ट nearly कोट का 400 और CS बोरिल on an फॉरेस्ट का initiator. That is ये और ये very दोनों में rare से even कुछ on तो ले the लूंगा duelist. An antidote, even though he didn't have that many kills, he could feel his performances, right? The way that he was playing, the clutches that he was able to find, he had a lot of impact frags throughout the entire game. That is OG for you on the map percent. But when you look at Metal, it was just a pure disconnect from the team. Individually, they were pulling off a lot of miracles, but as a team, वो लोग ने एमएन बीमन उनका ये तोड़ना चाहिए था रे ये तो हमारे जैसे खेले लोग We're going to be heading on down over towards the MVP of this game, of course, and it's going to be none other than Raw Fuel. Like, are you really going to be surprised? Not at all, you know, no doubt whatsoever. It is going to be very anyways, thanks to Riala though for providing all of these stats to us so that you can quickly see all of these scenarios. Now, we thought that Blackhawk had the best construction. Guess what? Rock will say I can do one thing. That is दो लोग ने पी लिया भाई इसको what he did. It's like 46% बेंचिक 386 ACS already, so you know that he had the most impact in the entire game. He was everywhere, no matter where you look at it. क्या He was on कैसे the map and he was
Hello Zodiac, what's up? Welcome to stream. Bye Darsh. किकी में दर्द के नशे कर रहा, सीधा वार्म अप कदम कदम। हाँ तो भाई शीश। An agent that always provides to site. You can try and go for a suitable display आई kind सोली। of अरे बेंच रजनीकांत। but even after विजडम टूथ पेन किसका, किसके अगेंस्ट है आज, क्या पता कौन है। open the space, ये देख कैसा बैठा है someone on ये। your side that can actually take the crosshairs of different या बाहर रे चूती। choke point. Otherwise, yeah, you can try and go for those utility users, try and go for those, combined utility play, those set play, those on that. I don't think so there's anything that can happen, especially when you're on the other side on a map. ऐसा चूती है भाई। हेलो अंकित साहू, व्हाट्स अप मैन, वेलकम टू स्ट्रीम। बाजू से मारा बेंच। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न चाहिए भाई स्केयर डेट को। शी कल चले। हेलो फाट वेंचर्स, वाओ। अरे बुलेट भाई के सामने कोई कुछ बोल भाई। एल्विश भाई स्प्रे छोड़ा ही नहीं वो। आना भाई ऐसा। आजा आजा, तेरी तो आजा। भिंडी लेफ्ट साइड गया था वो। कहा ना आइसक्रीम बुकार की वैन की क्या। बुलेट भाई आपकी हेयरलाइन ज्यादा टेंशन मत लिया करो यार। क्या करूँ यार, मिसा उंगली डाल डाल के पीछे गया उसको। अरे विस्कोसिटी चलते रहते, तू भी क्या याद रखेगा भाई, ऐश कर ले यार। टेंशन बहुत है यार लाइफ में। देख टेंशन भी एक चीज होती है, हेरिडिटरी भी एक चीज होती है। बुलेट भाई एक टिप दे दो। कौन सी टिप दे दूं भाई, बाल घटाने की टिप दे सकते हो। अरे कैसा करते रे, भूल गया मैं। इनसिक्योर करने आया है वो, इनसिक्योर करने आया है क्या यार। क्या इनसिक्योर करने आए थे भाई। शी किससे इनसिक्योर होगा बट में। रुको रे, मारो मत, दो गोली है, रुक रे तेरी तो। भाई मैं 6 फीट 2 इंच का लड़का हूँ, 16 इंच के डोले भी है, पर बेबी वॉइस है, क्या करूँ। 17 साल का, अच्छी बात है भाई, बेबी वॉइस है तो क्या हुआ, कुछ विषय नहीं है भाई। बेबी वॉइस है तो क्या हुआ भाई, चिंता नहीं करने का कुछ, तो भगवान की देन है। क्या पता वो वॉइस की वजह से तेरा कुछ अच्छा हो सकता है।
या फिर और एक चीज हो सकती है, अबे भेंडी, और एक चीज, हेडलाइन टकला इनकमिंग, और एक चीज हो सकती है, मतलब जो लोगों को ऐसा डर और लगता है तेरे सामने बात करने का, स्पेशली लड़कियां, तेरा आवाज सुन के वो लोग पिघल सकती है, समझ रहा है? कुछ लोड मत ले भाई, सब अच्छे के लिए होता है। समझ रहा है? पीछे तो देखो भाई। और अगर तेरे से कोई झगड़ा करने आने वाला हो, वो देख के पड़ जाएगा ना भाई सामने वाला। भाई 6 फीट का आदमी है। माइला नहीं, नहीं थोड़ी भारी करवा दो। क्या करेगा भारी करके भाई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल पर्सनालिटी मैटर करती है भाई, फर्क नहीं पड़ता आवाज क्या है, कैसी है। कन्विंसिंग आवाज है ना, बस कन्विंसिंग पावर है तो बस। मेरी भी आवाज खराब ही है, मेरी कौन सी अच्छी है भाई? मेरा आवाज खराब ही है। ए रुक रहे पीछे वाले, तेरी इसको पकड़ा। सेरम भाई क्या सीन? कौन किसको मार रहा है? बाहर तो आ थाने। अरे अंदर ही रुका है वो, सिटी वाले को देख रहा है, मार के बैठ गया वही स्विच। वाह क्या बात करता है, ले सब्सक्राइब कर दिया। अरे क्या बात है। अरे चने, अरे बेंडी, अच्छा वो ले गेमिंग आया है। नमस्कार बुलेट साहब, नमस्कार सेरम भाई। सेरम भाई पहले उनके जैसा बाल, फिर उसके जैसा माल। शी आज सब बोल रहा है भाई। मैं फॉक्स की चैट में भी आते हो। ऑलराउंडर है भाई की मैं। एक साथ 50 स्ट्रीम खोल के बैठती है, सबका आवाज कैसे सुन लेती है पता नहीं। मतलब कितना कंसंट्रेशन है उसका हर एक किस पे। चेस प्लेयर है भाई, कंसंट्रेशन तो है। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं भाई, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। शी मोटिवेटेड रहे भाई, बस बाकी कुछ नहीं है लाइफ में। मेरे जैसा टेंशन मत नहीं तो बाल जाएंगे। बेंचिक ऑफ क्यों करते हैं भाई ये डीएम में लोग, दोतर लोग। अरे क्या अगर, अच्छा ऑपर ही था वटा, फिर छोड़ रहे, अभी देता हूँ तेरे को, आजा चल। ओले गेमिंग वाईटी, अरे अटक किधर गया मैं? क्या इधर? ओई छी। बुलेट अगर वेंका होता मेडल के प्लेइंग 5 में तो क्या चल रहा होता स्कोर? क्या बता नहीं सकते, एक प्लेयर क्या ही कर लेगा। अगर एक प्लेयर की बात हो रही है तो एक प्लेयर चेंज करने की बात हो रही है, क्या ही होता है एक प्लेयर चेंज करने।
अभी किसमें वो इसके टीम में ना वीबोर के MIBH। और अब फ्रॉस्ट माइंड कर लेगा। अजीज भी तो करते आया है। अजीज क्या करते आया है? एक सेकंड बोल ना, बोल। ठीक है, सामने वाला है क्या? बट अच्छा हो जाए अगर वो ये डॉज ये बाय मिल जाए अपने को। अरे वॉच पार्टी चालू है रे। हाँ आजा TS पे। तू भी CS गेम में है? अच्छा ठीक है। मेरा मेडल और ये क्या है, मेडल और OG का वॉच पार्टी चालू है। हाँ अरे क्लिक करना था खाली। बेंचिक्स मेड इन भारत। हाँ बट वेंका मारता तो है भाई। ऐसा येड़ा प्लेयर ही है। एक येड़ा प्लेयर चाहिए भाई टीम में। नूब, तू नूब डेडी। ओए क्या चाटा दिया उसको। चल निकल पतली का, चल निकल। अरे क्या उसकी बूंद देख रहा था क्या है? माइला ओ भाई क्या कर रहे रे चने? क्या कर रहे? ए छोड़ छोड़ तेरी बेस का पकड़ा। हेलो जेडी, थैंक यू फॉर मेंबरशिप, वेलकम टू फिर। ठीक है बेंचिक आजा। नेक्स्ट अभी रिलोड करना पड़ता है इसमें। अभी तो वाटर कूद गया है उधर। चीटिंग। क्या बात है रेडी? क्या बात है, इतना प्यार। मेंबरशिप बाय। गोल गोल घुमा रहे क्या भाई? ये कनेक्टर क्या? बॉबे कास्टिंग कर तू भाई। सब भाग जाएंगे सब लोग भाई। तेरी कास्टिंग सुन के भाग जाएंगे। ऑलरेडी अपने इधर लोग इंडियन कास्टर्स को गाली देते हैं। पूरा कास्टिंग सुन के तो भाई हो जाएगा सबका। शी चल बेंच ले लिया मेरा ट्रेड किसी ने तो। अरे लैग क्यों हो रहा है? FPS हेलो, FPS लेफ्ट द चैट। नूब ऑपर है भाई तू कर रहा हो। कर ले माइक बंद के। मैं ही सुनू क्या? मैं ही सुनू मेरा आवाज? हाँ गंजड़ी देख, रियल डेडी आ गई बाहर। नूब डेडी। अरे गेम चालू होगी नहीं इनका। अरे कितना देर वही दिखाएंगे भाई। गेम चालू करो भाई फटाफट, इतना टाइम नहीं है। अभी ये बस्टर ने किधर भेजा है? वेटो का लिंक। अब दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माय नेम इज टी-शर्ट्स विनर्स रनर्स प्रोवाइड बी फैंटास्टिक टी-शर्ट्स। अच्छा ILG वाले टी-शर्ट दे रहे हैं अभी। क्या अनुराग तो मेरा ही शूटर है, मेरे को क्यों नहीं गया इस डायरेक्शन? ये किधर भाग रहे रे? चले कुरु ये ले। कर ले
और डैडी कैसी है? किधर गायब है भाई तू? शीश वाल्टर ब्लैंको। मैं तो हूँ रे, तू गायब छे। मैं तो गायब छे नहीं भाई, मैं तो इधर ही छे, इधर ही छे। चल निकल। और बेंडी वैफल ने दे दिया भाई। वॉफल वॉफल 69 डेडी का फेवरेट नंबर भाई। इधर देख रहे रे चने। बाय द वे डिले कितना है? अगेन डिले नहीं है मेरे स्ट्रीम पे, नो डिले। 269 इंडीड। लेडी का फेवरेट नंबर भाई। हाय बुलेट, लॉन्ग टाइम फ्रॉम वैल। भाई ये आई सी। ये बेंची कर रहे इधर। नहीं मर गया इससे अच्छा। ए रुक रे छी। अरे 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 वैफल आजा। गाली देगा मेरे को अभी। गन लोड नहीं हुआ, इसके पहले ही पिक करना है। देयर इज पावर कट इन मेडल बूट कैंप, सो टाइम लगेगा। बूट कैंप में कैसा पावर कट का इशू क्यों है? बट इन्वर्टर तो रहेगा ना आपके पास। डैडी नूब नूब आजा, साथ में वॉच पार्टी करते हैं। किधर है तू? अच्छा का 2 गोली में कैसे मार रही? दो था शायद में। नूब डैडी। जी किधर गई भाई? डैडी भाग गई मेंबरशिप लेके। नूब कहेगी पावर कट और कट होता है भाई मेडल के बूट कैंप में। नवी मुंबई में जब भी लाइट नहीं जाना चाहिए तब भी जाता है। पर्सनल प्रॉब्लम बड़ी। मुंबई छोड़ के बाकी सारे आउटस्कर्ट्स में लाइट जाता है भाई। टाइम वही टाइम पे, जो टाइम पे लाइट नहीं जाने मांगता। अपना बस्टर भी है उसमें से एक, वसई का धुरंधर। बस्टर भाई, बस्टर भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? बस्टर मारेगा। अरे मर चूतिए, क्या कर रहा है? Did he leave the chat? भाई इसने किधर भेजा है मेरे को? बोला मैं तेरे को भेजता हूँ। पेटो लिंक किधर भेजा है? रुक रे चने। डिस्कॉर्ड पे भेजा है क्या? उधर ही कैसे स्पॉट होता है भाई? क्लास दोस्तों, कुछ वाड़ी विषय आने वाला है, समझ रहे हो? अपना एकदम वन साइड विषय। 2 विषय आने वाले अपने। मेरे नेशनल्स के टाइम पे 2 राउंड में बीच में लाइट चले गया। ओह शिट, वही तो
भगवान साथ नहीं देता है क्या? भगवान साथ देता है बट लाइट साथ नहीं देती। किधर गई है धोतर डेडी? अबे ये क्यों नहीं आ रहा मेरे को? क्या बोलते हैं उसको? पेन किलर खाने का है मेरे को। क्या 3 किल के बाद ही मिलता है क्या पेन किलर? ऐसा कुछ है? कैसा चूतिया ये? कितना बड़ा चूतिया रहेगा भाई वो। भोसड़ी के मर, तू मरने के लायक है बॉट। इधर खड़े रह के देख रहा है महिला कौन है क्या आजू बाजू? चूतिया। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। अच्छा मेरे को भी आया है। वर्टिगो मैप लिया बस्टर ने। क्या हिला? मेरे को फोन करके बोला बेटो का लिंक देता हूँ, खुद ही बेटो कर लिया दो उतर। अरे डिंग के भोसड़ी का। ए रुक तो जा इच्छा गाट। बेंचिक साला। डेडली भेर आ रही हूँ, डेडली नूब है। अरे भोसड़ी के कितना रन करेगा। अच्छा इधर चल, ये लेफ्ट में मत आ रहे भाई, आना राइट में मोकड़े मैदान में। चूतिए लोगन 2.0 ये भी हैकर है शायद। भेंचिक लोग हैकर लोग। ये रुक जो रहा है। ओह चक गावत, ये हैकर है। लोगन 2.0 हैकर। हैकर कोरचिस, हैक कोरचिस साला। देख भाग गया हैकर। ए रुक 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 रुकी जा भुसड़िक्स। हेलो अर्सडाइल, क्या सीन? कैसे हो जी? बहुत ही बढ़िया पेला भाई लोग कर लो। ग्राइंड ग्राइंड क्या? अरे कब चालू होगा भाई इनका? लोग है भाई। कर लोडू ये लोडू विशल पड़ू चल बे लोडू। भाई जिगल करना सीखना कर लो। और वर्सटाइल जी कैसे हो आप? तो मेरे को रॉकेट लीग सिखा नहीं रहे। 2 महीने से जो मैं तुम्हारे पीछे लगा और 2 महीने से जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, सब देख रहा हूँ मैं। कुछ सीन नहीं है दोस्त, कुछ सीन नहीं है दोस्त, समझ रहे हो? कुछ सीन नहीं है। ये इसने पीछे वाले को मारा। ट्रैकर वायस। Hey, wake up. Hey, wake up! मरी जा बुसड़िक्स। ये बेंचिक रुक, तेरी तो अभी आ। शी भाई कौन वेकअप पुकुप कर रहा है? भाई मेरे को टी शर्ट खेलने का है अभी, लौट दो। बहुत हो गया एम4 का नाटक। क्या मेरे को भी पोलियो हो गया।
बेचारा बस हो गया भाई तेरा डीएम। मोहित बारोट क्या सीन? बस हो गया। इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, फिर इसको लेके आएंगे इधर लेयर 1, लेयर 1 BULL3T टी शर्ट साइज XL, टीम नेम वैलर, गेम गेम कौन सा है? बेंची गेम वैलोरेंट। पेस्ट टी शर्ट साइज XL, टीम नेम इधर क्या था? क्यू था शायद। वैलोरेंट खत्म हो गया अपना काम। गेम कौन सा है टू बी ऑनेस्ट, मतलब बेचारे भाविन भाई को चैट में डालना पड़ रहा है TEC के। हाँ क्या कुछ डाला क्या उसने दोतर ने? देखते रुक जाओ। मैप टू व्हेन पावर कम्स बैक। वाह यार पावर क्यों जा रहा है इनका? मेरा पावर लो भाई थोड़ा, मेरा ऐसा पावर लो थोड़ा, और पावर के साथ खेलो, पावर के साथ स्ट्रीम करो, समझ रहे हो? है कि नहीं? एकदम वन साइड स्ट्रीम, वन साइड स्ट्रीम होनी मांगती है भाई। क्या दिख रहा है? ओनली फेस कैम में कैसे दिख रहा हूँ? ये थोड़ा सा इधर ऐसा वो बुलेट का यू है, समझ रहे हो तुम लोग? इसके लिए मैं वो ऐसा वैक्स करके रखता हूँ इधर का जो है ना, ऐसा वैक्स करके रखा हूँ मैं। तुम लोग को समझेगा नहीं वो। आई एम वेरी क्रिएटिव मैन। पाशा ने बुक किया था, किधर है पाशा? Sound Let's हेलो, resumed. क्या होता है बॉबी? कैसा है बच्ची? चल रहा है ब्रो। तेरा खत्म हुआ वॉच पार्टी? नहीं, पहला पावर कट हुआ था, इसके लिए स्ट्रीम बंद किया था वो लोग ने। अभी पावर आया, एक गेम हुआ और मेडल बूट कैंप पे पावर चले गया। अरे बाप, और अभी मेरा मैच है तेरा कौन सा मैच है? CS2 का। क्या बात है? वो भी स्ट्रीम करने वाला है? नहीं, शायद स्ट्रीम बंद करूंगा अभी। नहीं, मैं देखा तू लाइव है इसलिए पूछा। स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा ना, मैच कैसे स्ट्रीम करूं? शायद देखते कर पूछूंगा। लेना, एक दो राउंड के डिले में कर ले, क्या फर्क पड़ता है? और कॉम्स बंद करके कर ले, खाली गेम का साउंड स्ट्रीम कर ले। तो गेम प्ले देखे असैसिन्स क्रीड मिराज का? हाँ बताओ। नहीं, मतलब मैंने भी नहीं देखा है ये। देख अच्छा, मेरे जाया को ऐसा स्ट्रीम बोल कर रहे रही हो? है, आ जाओ खेले साया क्या? वैलोरेंट। असैसिन्स हाँ क्रीड हाँ, खेला है पहले क्या? पहले वाले खेले ना, यस। ये वो वाला? गेम कैसे नहीं खेलेगा यार? हाँ मतलब वही मैंने तो। तो नहीं खेला है। क्या मुशी भाई अरे क्या मैं तुमने नहीं नहीं खेले? खेलता भाई। हाँ मेरे को सिंगल प्लेयर गेम पसंद ही नहीं है। गेंशिन कैसे अरे खेलते हो बाप फिर? रे। टेंशन में दोस्त लोग खेल सकते वो हैं ना साथ में। मल्टीप्लेयर है रे, ओपन और वर्ल्ड। फिर भी सोलो खेलते रहते हैं। तो खुद खुद का डेली क्वेस्ट तो सोलो ही करना पड़ता है भाई जान। हाँ सोलो खेलते रहते हैं इधर दोस्त लोग को छोड़ के। उस अगर दिन मैं भी, तो रोज बोलता हूँ भाई गेंशिन आओ, तुम उस लोग आते ही उस नहीं। दिन क्या टोपी दे पता है अनैज मुशी भाई ने? क्या? मुंबई से मैं आया क्या पुणे टॉपिक? तक, बोलते कि घर से मुंबई लाइव से पुणे से आया आता आया है। पुणे मुंबई तक? तक क्या ना? है, बॉट है क्या? मुंबई घर से तो आया पुणे तक। तो घर नहीं जाने वाला था क्या हाँ। तू? हाँ, क्या? तो घर घर ही तो जाने वाला था।
तो बोला तो था, उधर डिसाइड हुआ था अपन 5 मैन खेलेंगे। हाँ तो इतना फाइनल कैफे भागा में हो गया दौड़ी, ना भाई। इतना भागा दौड़ी करके भी मेरे को स्लॉट नहीं दिया भाई। फाइनल कैफे शी में हो गया ना। तेरे को क्या बोला था, कैफे रुक तो खेलेंगे, तू चले शी गया, बोलता ऑनलाइन आता हूँ। अरे यार ऐसा ही होता है यार, क्या करने का। तो ऑनलाइन तो हम भी आ सकते हैं ना ऑनलाइन। ऑनलाइन भी आए नहीं। ये जाया का मेंबरशिप 51 वन से है भाई, क्या सी। क्या है 1500? कोई तो बंदा 50 महीने से जाया का मेंबर रह चुका है। अरे एक तो ये डाउनलोड कैसे लॉस आ रहे हैं। मैं अभी है मेरे चैनल की मेंबर 20 20 महीने से, 18-20 महीने से। क्या बात कर रहे बेटा हो? पॉज कर दिए। अनस तूने डाउनलोड चालू रखा है क्या? हाँ बैकग्राउंड में चालू है ना मुझे। कितना मालूम है? 4 GB हो गया क्या 109 बात में कर से। रहे हैं। हाँ, मैंने तो पॉज कर दिया। तेरे को स्पीड कितना आ रहा है? स्पीड आ रहा है 69 मैच हो गया Mbps। क्या? नहीं यार, ओ वो फर्स्ट फक। BenQ है, पावर नहीं है उनका बोलते। अरे बट ये तो कुछ झोल है। उस दिन गौरंग बता रहा था कि ये ऐसे ही दिखाएगा, आ रहा है तेरे को रियल में 5-10 Mbps ही, बट फिर 4 GB कैसा फटाक से होगा। इडियट है गौरंग। तेरे को अरे तो वो 4 MBPS वो 2 प्रकार का उसमें आता है। नहीं 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 दादा, मेरे को 70 Mbps दिखा रहा है स्ट्रीम पे। हाँ भाई वो मेरे सीन है को थोड़ा मेरे को आ रहा है 9 उसमें। एमबीपीएस, उसमें भी लॉस आ रहे हैं इतने। मेरा नेट आवाज वाला भी था नहीं आ ना रहा पहला, हाँ, उसका पैक था 3 MBPS, और मैंने जो अभी लगाया वो है 150 MBPS। तो है। वो 3 MBPS में Mbps ना, का पैक था तेरा? सुन तो हाँ वही तो। अरे मतलब कैसा है अभी, अगर मैं नेट प्रोवाइडर हूँ और तू नेट प्रोवाइडर है, और मुशी भाई अपना ये सर्विस क्लाइंट। हाँ क्लाइंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ उनको कि 10 MBPS का पैक है मेरा, वो ले लो, और तू बोलता है 100 MBPS वाला पैक है मेरा, वो ले लो, दोनों सेम ही रहता है। समझ रहा है? वो मेगाबाइट्स और अबे वो वैसा नहीं रहता, मैं तेरे को बताता हूँ। जो नेट वाला तेरे को बोलता है ना तुमको इतना Mbps आएगा, उसका 1/4 तेरे को एक्चुअली आता है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, वो पता है मेरे को, वो समझा मैं। हाँ तो मैं वही कैलकुलेशन रहता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो नहीं समझा तू। मैं वो 10 अभी समझ, वो तो बराबर ही अगर चेहरे तू है 10 100। Mbps ऑफर कर रहा है और मैं 1 Mbps ऑफर कर रहा हूँ, तो हम दोनों की इसमें सेम नहीं आ सकता है। नहीं 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 जो नेट वाला नहीं, ऑफर करता है ना, वो डिवाइडेड बाय 4 तेरे को घर पे आता है। अबे जो 100 मैं जो बोला वो एमबीपीएस का समझा नहीं तेरे को। अबे 100 एमबीपीएस का प्लान है, उसमें भी बोलेगा कि तेरे को 100 एमबीपीएस थोड़ी आएगा डाउनलोड स्पीड। हाँ अरे 25 मैं क्या Mbps बोल ही रहा हूँ, आएगा। तुम क्या बोल रहे हो, दोनों भी। अरे तू जो बोला मैं उसका ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। नहीं मैं वो बोला ही नहीं जो तुम बोल रहे हो। तू बोला कि अगर एक नेट वाला एक क्लाइंट को 10 Mbps ऑफर करता है और हाँ दूसरा नेट वाला वही क्लाइंट को 150 Mbps ऑफर करता है, तो तू बोलता है दोनों का नेट स्पीड सेम रहेगा। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, तू समझा नहीं मैं वो क्या बोल नहीं रहा हूँ। रहेगा अभी। अरे तो वो मेरा गलत है सुनो तो, भेंडी ना। भेंचोद बड़े 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 बड़े, सुनो तो मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। बता बता वापस बता। तू एक्सप्लेन गलत करता है रे, तेरा हाँ तू मेरे को एक्सप्लेन सही नहीं कर समझाने नहीं आता, रहा। वही तो हाँ प्रॉब्लम है। ये मैच के सिंपल। पहले इतना मेरे को दिमाग मत लगाया ये करना देख, भाई। एकदम मुशी नॉर्मल भाई में बड़े एक्सप्लेन बड़े कर। रुकता ही नहीं है भाई इनका। तो एक्सप्लेन कर वापस। ये देख, 1 सेंटीमीटर और 1 मिली क्या बोल रहा हूँ बेंच, एक 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और मतलब 100 100। मिलीमीटर सेम है। हाँ हाँ समझ गया। हाँ हाँ, तो वैसा वाला हिसाब है वो, जो बोलते हैं ना। अभी अबे मेरे तो साथ हुआ ही है। अरे बट सुनो। दोनों 1 एमबीपीएस एमबीपीएस, रहेगा ना। दोनों एमबीपीएस यूनिट में बता रहे ना तेरे को। हाँ तो हाँ दोनों अरे सेंटीमीटर वही हो गया तो ना। बोल रहा हूँ, नहीं तुम लोग। नहीं नहीं, आने दो, तेरा बात अभी छोड़ो। बराबर है। तू बोल रहे कि दो अलग अलग यूनिट में अलग अलग मेजर सेम होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। बट ये नेट वाले दोनों तेरे को सेम यूनिट में नेट दे रहे ना, 150 एमबीपीएस और 10 एमबीपीएस। हाँ। हाँ और मैं वो बोल केबीपीएस रहा तो था, 1000 में तुम्हारे है। पॉइंट में बोल रहा ही नहीं था मैं। अच्छा। तो ऐसा रहेगा कि 150 केबीपीएस रहेगा चुप और करो 10 मुशी भाई, दो एमबीपीएस मिनट रहेगा, तो फिर सेम हो गया ना। लेकिन नीचे। नहीं, एमबीपीएस और केबीपीएस में 1000 का फर्क है, अरे 100 का थोड़ी है केबीपीएस नहीं कन्वर्जन। है वो, मुशी भाई। तो सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर कैसे आया आखा फिर? भोसड़ा। Sound muted. नीचे बड़े बड़े बोलने ही नहीं देते यार। एक बंदे को आता नहीं बोलना कुछ। भाई अपना मैच कब है भाई? अभी जाते हैं टीएस पे। अभी अभी भी अगर वही टॉपिक बोलेंगे ना, इच्छा गावत वही बोलेंगे, देखना है तुम लोग को, ये देखो। Connected.
वही बोलेंगे। Channel switched. हाँ क्या हुआ? तो जो 150 हाँ MBPS रहता है ना क्या बोला था भाई? वही बोलेंगे अभी बजाने के बाद ही। तू कब बोला ऐसा? अबे वो मास्टर को पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है मास्टर कि को उनने पूछ रहे गलत हैं। सुना, वही तो मास्टर से कंफर्म कर रहे। हाँ भाई एक लॉयर एक धंधे वाला, आइला दोनों मिलके मेरे मेरे मुझे तुमको धंधे वाला बोल रहे हाँ, अरे धंधे धंधे वाला वाला मतलब मुझे। बिजनेसमैन भाई। धंधे वाला दलाल बोल रहा है दलाल। धंधे वाला बोलता है। अच्छा बिजनेसमैन मास्टर बोलना सुन चाहिए सुन तो मास्टर सुन, ठीक है, तेरे पीसी पे 150 MBPS आ रहा है। हाँ User was हाँ। moved out of your channel. अरे User joined your तेरा channel. प्लान है 150 MBPS का बराबर, हाँ मेरा प्लान है 10 MBPS का बराबर, हाँ। और अपना डाउनलोड स्पीड सेम आ रहा है, क्यों ऐसा? अरे बता ना, स्मार्ट है ना अरे तू? तो नहीं उसको बताओ एमबीपीएस दो अलग अलग एमबीपीएस है, तो अलग अलग अबे MBPS एक क्या है? मेगाबाइट और एक माइक्रोबाइट ऐसा रहता है वो। नहीं, माइक्रोबाइट करके कुछ होता है। हाँ है कुछ तो, वो नेट वाले ने बताया मेरे को, पता नहीं। अबे अरे नहीं तेरे भाई, को चोदू माइक्रोबाइट बना रहा करके है थोड़ी भाई। कुछ होता है। नहीं कुछ और रहेगा फिर उसको, मिलीबाइट माइक्रोबाइट मिनी बाइट ऐसे कुछ तो रहेगा। ये भाई वो तो मेरे को भी पता है और नहीं रहता, बट वो बता रहा था तो पता नहीं, रुक देखते हैं अपन। नहीं रे, केबीपीएस, एमबीपीएस, किलोबाइट्स। जीबीपीएस, टीबीपीएस। माइक्रोबाइट हाँ माइक्रोबाइट कुछ नहीं होता है भाई। केबीपीएस के नीचे कुछ नहीं रहता है। केबीपीएस के नीचे नहीं है वो, 2G केबीपीएस और इंटरनेट में एमबीपीएस 100 केबीपीएस का नेट आता था। KBPS मैक्स मतलब मिनिमम KBPS है भाई, लोएस्ट। अरे तुमको याद है कि नहीं, 2G का जमाना जब 100 केबीपीएस भी ज्यादा लगता था कि भाई 100 केबीपीएस आ रहा है। हाँ डब्बा फोन हुआ KBPS करता था मेरे पास। MBPS GBPS TBPS। अरे और क्या एमबीबीएस। नहीं वो MBBS डॉक्टर का डिग्री हो गया ना। हाँ तो डॉक्टर का डिग्री है ना, तो फिर उसको User was moved out of your channel. User joined your channel. डॉक्टर वालों को 150 MBPS में स्पीड कितना आता रहेगा बुलेट बता? लैंड आता है एक उनको भाई। एमबीबीएस उनको आते स्पीड, एक एक एमबीबीएस। MBPS माइक्रोबाइट बोलता है। एक मेगाबाइट है, और अरे नहीं क्यों मैं वो बोल रहा हूँ, वो बताता हूँ ना तुमको कि मेरे को उसने जो बोला था ना, वो अरे 3 fuck, मैंने एमबीपीएस का, एटमॉस्फेयर में डाल दिया। हाँ 3 एमबीपीएस का प्लान था, उसने बताया ऐसा। तो वो 3 एमबीपीएस था ही नहीं, वो 30 एमबीपीएस का प्लान था, समझ रहे? स्पीड कितना दे रहा था? 3 MBPS स्पीड उसका था बहुत ज्यादा था, मतलब एक 20-25 वगैरह रहेगा, बहुत ज्यादा 20-25 मतलब क्या, एमबीपीएस। चीता की स्पीड का था क्या? अरे मतलब 3 अबे एमबीपीएस वो जो KMPH में उसने रहेगा बताया भाई। ना, माँ की आ गई हाँ। शायद, कुछ बात ही नहीं करना चाहिए इधर। मस्ती 25 कर रहे किलोमीटर हो। पर आवर। वो भी यार ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे एक तो मेरे अभी को तूने बात बोला करना नहीं वो आता। उसने, नहीं मुझे मैंने पूछा कितना स्पीड रहेगा, तू तो बोलता है बहुत स्पीड रहेगा। अब बहुत हाँ, अरे बहुत subjective है ना। स्पीड मतलब 3 एमबीपीएस का जो प्लान बताया था ना, उससे ज्यादा था। हाँ, तो अच्छा 3 नहीं दिखा रहा था उधर, 25-25 ऐसा दिखा रहा था, समझ रहे हो? ध्यान दो भाई, समझ में आया तो छोड़ो, नहीं समझ गया, हटाओ। मैं समझ गया यार, ऐसा क्यों हो रहा है तुम? अब मेरे को स्क्रीन पे 70 एमबीपीएस आ रहा है, इसका क्या करना है वो बता मेरे को। तो तेरा प्लान कितने का है वो बता पहले। मेरा प्लान है 100 एमबीपीएस। हाँ तो बराबर है ना। तो फोन करके तेरा झगड़ू प्लान नहीं आ रहा है अगर करके। तेरा प्लान अगर 3 MBPS का है और मैं तेरे को मैं बहुत भी स्पीड आ रही है, मैं भी तो करता हूँ। वांदा है अपने को, तो वांदा है। अगर किसी का प्लान 3 एमबीपीएस का है ना, तो और उसने उसको खेलना नहीं बहुत स्पीड आ चाहिए। रही है तो 3 एमबीपीएस वाले को खेलना ही नहीं चाहिए। 3 एमबीपीएस वाला मुझे कांटेक्ट करे, मैं पैसे देता हूँ एमबीपीएस कराने। उसको GTA 3 डाउनलोड करने एमबीपीएस पे बोलेगा नहीं तो चलेगा। ए देखो, दिन जाएगा अभी GTA में। 150 एमबीपीएस का प्लान है मेरा, मेरे को 150 एमबीपीएस हाँ। आ रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। दिखा रहा है इधर ओकला डियर स्पीड वो पे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे देखो मेरे मैं को भी जो ओकला स्क्रीन पे ये स्पीड 70 टेस्ट का दिखा रहा बता है रहा ना, ये हूँ। जोल है। किस पे देख रहे हैं वो झोली बता। चे वो झोली चे। अरे तू देख किस अरे पे रहा है? चुप बैठो भाई। अरे तू टेस्ट किस पे कर रहा है वो मेरी बोलना गाड़ी भाई, में किस टेस्ट पे? कर रहा हूँ गोल गोल घुमा के। क्या हाथ कितना स्पीड में घूम रहा है ऐसा? हाँ। भाई ज्यादा फास्ट मत चल, उड़ जाएगा। हाँ, ये बैटरी देखो खेल रहा ये है। देखो ये देखो ये देखो, सुनो तो। सुन कितने MBPS पे हाथ घुमा रहा है वो बता। एक एमबीबीएस पे घुमा रहे हो, क्या कर लोगे? 3 एमबीपीएस पे घुमा रहा हूँ। आई होली। ये देखो अभी है ना, मेरे को इधर डाउनलोड स्पीड
150 एमबीपीएस दिखा रहा है इधर देख रहे हैं। वो ओकला स्पीड टेस्ट अरे पे। वो चूती है, उसमें हाँ, क्या देख रहे हैं? और अगर मैं कुछ गेम डाउनलोड करूंगा ना तो इतना नहीं आता उसमें, समझ हाँ रहे तो हो? वो समझी बात है ना भाई। उस पे कितना आता है स्टीम पे? डाउनलोड करेगा देखना कुछ तो पड़ेगा, रुको जरा। 150 कुछ है क्या एमबीपीएस ना, मतलब 50-60 के ऊपर तो आना डाउनलोड चाहिए। में रहेगा कुछ तो, देखते रहो। ये पबजी है, अरे डाल के GTA देखते। डालना, कल खेलते हैं, तेरे स्ट्रीम पे हाइस्ट करते हैं। GTA क्या 5? हाँ GTA 5। मेरे को स्पीड आ रहा है 144 एमबीपीएस, 142 एमबीपीएस, स्ट्रीम 146 पे। एमबीपीएस। हाँ स्टीम पे 140 बाप रे। अरे तो 146 तेरा 150 एमबीपीएस। एमबीपीएस का प्लान नहीं है भाई, ज्यादा है फिर। नहीं 150 एमबीपीएस का ही है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे बॉबी 150 एमबीपीएस का इम्पॉसिबल है तेरे पैसा को भरता हूँ मैं। अरे स्ट्रीम पे दिख रहा है ना, देखना। रुक जा स्टीम खोलने देते। अभी आया, रुक। बॉबी को कोई मिला नहीं सुबह से, मेरी कर रहा है। स्ट्रीम पे दिख रहा है ना, देखो। User was moved to your हाँ सही channel. बोल रहे हैं। देख तू जरा। 144.7 एमबीपीएस, 148 एमबीपीएस। हाँ नहीं मतलब हाँ तेरा तो प्लान तेरा और मैक्स ज्यादा है। 500 का है, हाँ 500 का है, अरे 300 का है। अरे अरे सही रुक बोल रहे जाओ हैं। भाई। अरे सही बोल रहे हो भाई, सही में। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बहुत क्या पैसा कल है बाप मेरे रे पैसा पास, देते बॉबी को हैं। इसके लिए इतना मैंने। स्पीड कैसा आ रहा है भाई। हाँ ना, क्या फटफट हो जाएगा। ये GTA डालना, कल खेलते हैं। ये सब अंडू उंडू क्यों डाउनलोड कर रहा है, जीटीए कर बॉबी। अरे मैंने वो तो पॉज पे रखा चेक है, मैं करने रात के को लिए। डाल देगा। GTA 5 अबे यार रात को गेम ही नहीं है मेरे पास, क्या डाउनलोड कर। अनेश तेरा दे दे इसको एपिक। ये देखो तूने 150 एपिक पे ये एमबीपीएस नहीं का करा। प्लान 999 रुपए में, ये डाला है मैंने। क्या क्या? 150 एमबीपीएस का प्लान ही है वो। जो का है क्या? बुलेट कौन सा नशा किया है भाई? देखो क्यों? बताओ इसको कौन सा जरा। नशा किया है? क्यों कौन सा नशा किया है, बता जरा कि मैं। पेशा। सब लोग आके User मेरे को ये left भर your रहे हैं channel. भेंडी। क्या विषय You है? were moved. अबे User was moved to अरे your channel. ओए, हेलो। एक सेकेंड ना हेलो। बस्टर, जरा विषय हाँ चालू है ऊपर, एक सेकेंड। User joined your User channel. was हेलो। Moved to your channel. हाँ हाँ बताओ क्या विषय है? क्या सीन है फिर? क्या सीन है? 150 GTA डाल दे। एमबीपीएस। अभी गेम नहीं है मेरे पास। तेरा इशू जियो है। फाइबर है क्या? अरे हाँ गेम तो मैं तेरे को हाँ मेरा एपिक गेम्स ये दे दूंगा, तू उससे कर हाँ लेना। हाँ। अनेश के मेरे पास पास दो 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 है। अकाउंट है। हाँ ए और चालू एक हो गया मिडल का। अपन At 3 the हो end गए, of the day, और it's एक just शूटर जमा कर Aussies, GTA के man. लिए। 4 मैन हाइस्ट Marshall, चालू कर देंगे। singing such a beautiful song, takes down 3 बेंच सिड है। players. प्रकाश नहीं खेलेगा ना। सीड प्रकाश के बाद नहीं रहेगा। They're in control and they're coming out of this अब game. तो अभी और पर किसी कहाँ से खेलेंगे लाऊं? किसके सर्वर पे बे? अरे वो सब क्यों अरे वो टेंशन ले सब रहा है? झोल आरपी है नहीं मूशी खेलना भाई है, के। आरपी नहीं खेलना है, हाइस्ट करनी है। और इतना अरे मजा भाई आएगा ना, भाई इतना व्यूइंग आएगा तेरे को, पब्लिक फैन हो जाएगा। ओ बुलेट, ओ भाई बुलेट। अबे तुम लोग गाली एक ज्यादा आदमी देते हो। ने पेडे 2 400 रुपए में खरीदा और उसको ही पेडे 2 नहीं खेलना है भाई। मतलब समझ रहा है बॉबी, पैसा हो तो इतना पैसा होना चाहिए। जबरदस्ती पेटे का टू गाड़ में तो घुस के 400 रुपए खरीदेंगे। का हाँ किसने नहीं जबरदस्ती लिया? का। अच्छा ये 400 मुशी रुपए भाई का ना। गेम खरीद और फिर हाँ तेरे को वो खेलने का भी नहीं है। हाँ मतलब वैसा ही सामने है। से दूसरा दोस्त पूछ रहा है कि भाई आओ हाँ अपन पेडे 2 और खेलते हैं, फ्री की लेकिन गेंशिन तेरे इम्पैक्ट को खेलनी है। हाँ और तेरे को उतना जो एटीट्यूड दिन है कि नहीं खेलना है मेरे को पेडे हाँ 2। पैसा, जो वही तो बोला दिन ना मैं, धंधे खरीदा, वाला आदमी। जो दिन खरीदा वो दिन 400 खेले, रुपए बाकी भाई। तो खुद भी नहीं खेल रहा था कोई। पेड़े पेड़े करके भाई पेड़े मैंने खिला तो दिए। बहुत है लगाए, पेडे, मैं पेड़े बता में देता तो हूँ, लौड़े रुको लगाए जरा। और कुछ नहीं है। जान दो भाई, जान दो। 12.5 घंटा खिलाऊं मैं, मेरे से तुमको तो बात ही आपस मत करना। आपस में अंदर गोटी गोटी खेल के पेड़े करना है तो छोटी मैं कुछ नहीं कर सकता। इजी हाँ किधर? भाई, क्या किधर जा रहे हो? 40 रुपए में खरीदा हुआ गेम मैंने 12.5 घंटा खेल लिया है, तो मुझे तो बोलना ही मत कि ऐसा ना वैसा। भाई सब मैंने तो ट्रेड ऑफ। निकाल दिया भाई गेम, डिलीट फ्रॉम अकाउंट। वही तो बोल रहा हूँ ना, एटीट्यूड देख भाई। ऐसा नहीं कि 400 रुपए में मैंने खरीदा वो खेलते हैं। भाई कौन खेलता है बीटी टू पर का मेरे पे ऐसा। जगह ही नहीं है भाई, 90 GB का गेम है वो। भी बोला ना तुमको, 500 GB का ही है अपने पे। बहुत लेट लर्क हो गया अच्छा मेरे तो को। एक ये तो खरीद के डाल दो ना, 3-4 हजार रुपए का आता है, Hey, वो तो wake ले ही up. सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या खरीदेगा, SSD खरीदेगा। अरे बट ऑलरेडी एक हेलो हेलो। Switched. क्या फैतान कर को रहा है कॉल यार? करके बुलाया क्या? नहीं, तो कब बुलाएगा फिर? पता चलने के बाद। भूला नहीं कि नहीं। क्या? भूला नहीं कि नहीं, उसको क्या पता मेरे को। अबे मैसेज डाला ग्रुप में, देखा नहीं क्या? नहीं क्या देना। तो देख। हाँ नहीं देखा मैंने, अभी देखा। हेलो किधर है रे? अरे इन गेम क्या कर रहा है? मैच है तेरे को बोला था ना 6 बजे।
अरे पक्का का क्या 6 बजे बोला तो तेरे को मैच है। रिप 6 बजे बज गए 6। हाफ हुआ है। क्या हाफ हुआ है? उसको बोल छोड़ के आने हो। तेरे खुद के आईडी से खेल रहा है क्या? नहीं ना, फिर आजा। किधर है वो? पीछे ऊपर। अरे छोड़ के आना फिर, अभी क्या कर सकते हैं। देख भाई, मैं तो कुछ नहीं बोल, मैं कैप्टन क्या नहीं कर हूँ रहे टीम हो? का, तो मैं नहीं बोल सकता कुछ। ठीक है बाइक पे तो डीक्यू दे देगा। ठीक है। हाँ ठीक है, चलेगा। ओ इसका एडमिन कौन है रे? अरे तो 2 मिनट बाद वापस फोन कर, उसको बोल नहीं मान रहा है। हाँ अरे अरे तू भी क्या सत्यवादी बोल रहा है भाई। भाई, सबका देखना पड़ता है, नहीं तो वापिस सब लोग गांड में घुस जाते हैं। 2 मिनट परत फोन कर, बोल नहीं मान रहा है। अरे आह, ओए उंगली पहले ने क्या मारा है? शागावत। अरे पागल हो गया है भाई। भाई कास्टर लोग इधर पागल होने चाहिए, क्या कर रहे भाई? ठीक है। वार्म अप। भाई क्या इसको कुछ हाइप ही नहीं बनाया भाई, इतना अच्छा मारा उसने। बुलेट तो नहीं है सर्वर में। सर्वर है ऑलरेडी ज्वाइन, सामने ले 5 आके बैठे। स्ट्रीम चालू है, कर रहा हूँ बंद। दोस्तों मैं थोड़ी देर में वापिस आता हूँ वॉच पार्टी के लिए, समझ रहे हो? ये बंद करना पड़ेगा मेरे को। क्या होते हो? छूने से तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे। मैं ऐसा ही रखता हूँ, बी राइट बैक पे डालता हूँ स्ट्रीम को इसको।
पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता। हार्ट किधर? Being given away, Excali. He should not peek anymore. The siege is gonna be gorgeous. Wait, it doesn't catch off Blackhawk though. They're still gonna be able to go in. The flashes are good. And then here comes the swings. Ozzy's position is known. And now all the members on the defensive side, they're gonna try to run on back in. And Ozzy's, how does he find the other player? Poor old Whip, he jumped out to maybe find something out for his teammates' first initial contact, but he went into the crosshair vicinity of Ozzy's. Wow, that's just rough. That is so unlucky. Yeah. It's gonna be unlucky though, but besides of OG, I feel they're really happy right now. 8-1 is what the scoreline is, and they have every single ultimate they want. Right side from the two ultimates I was talking about in the previous round. To add onto it, they have the orbital strike and the night call to work around it now. So there's a lot that they have on board, but it's all about the execution. Paradox didn't try to play around with Aziz, but that's not what you do, my friend. Excali converts 2, and now Medal have lost their numbers again. 2 versus 4. A double up in terms of the players out there. But OG, I mean, for the size of Medal, my bad. More or less, it's done for this round. It might just go in for a 9-1 scoreline. Also, looking at the positioning, I mean, Excali is going to hold the best of the position out there. It's Shaw is easy trying to peek him. That's going to be Excali who shuts him down. A 3K for him. And now Wimp, his location is compromised onto trying to take one down. Yes, he's able to do that, but that's all he'll be allowed to. 9-1, as I keep on saying it. OG, they have a great hold on this map. A great hold. Medal Esports, they're not able to do anything. I mean, look at Paradox. He did try to teleport his way right towards the face of his enemy, but that just did not work out at the best, and there was an instant denial coming up. And after that, it was every single player from the sides of Medal falling down. Finally, the timeout will be activated, but I feel it's way too late now. 9-1. I mean, we were talking about a 7-5 a while ago, and it's a 9-1. Even if they go in for a 9-3, which is a bit difficult looking at the economy or talking about the economy. I'm not really sure on what will they be able to pull off though. Yeah, the members of Medal, they're playing a very dangerous game from time to time. They're just rushing in and hoping for these executes to work, but that's not how things are going to work out for the Medal. They need to go in for a plan now that they have 4 ultimates online. These 4 ultimates can easily be cycled through the usage of 2 to get 1 round and then being able to utilize. हेलो क्या कर रहे हो? खत्म भी हो गया मैच। कब का खत्म हो गया? जीत गए? जीत गया? जीत गया। क्या बात है? खत्म प्रोफेशनल है बुलेट भाई। इसलिए प्रोफेशनल बाबा। चल जरा स्ट्रीम पे आओ। हाँ मैंने मारा भाई। ए धापा धाप। मोहित भी मारता है ना बहुत? हाँ मारता है। जरा स्ट्रीम पे एक झाकड़ी मार के जाओ जरा। राउंड चालू है, फिनिश होते ही झाकड़ी मार। हाँ सब लोग। एमएन है एक। जेट समझ गया। Sound muted. हाँ जी दोस्तों। क्या विषय अपन आ गए वापिस। भाई CS2 का मैच था भाई, ड्रीम हैक का, जीत गए पहला गेम। That's going to be true for now. Paradox will be going in for the dimensional drift coming up. He does have the location of Frostbind out there. I mean, look, they're just trying to run away. Seekers being invested from both of the बाप रे वो पैरा क्या कर रहा है? the nightfall as well. A lot of ultimates being invested onto Excali. अरे बाप रे। और 4 लोग ये पे थे उनके। शीश। अल्ट है ना इस पे। The execution seems to be perfect and they got the spike planted. 3 versus 4. Now it completely depends on the showstopper if they are able to find out any value with the showstopper for themselves. बोल की बोल ना कदी कहाँ रे क्या क्या फर्स्ट क्यों नहीं होगा चालते की काय माहिती आता आयल असल्यावर क्या म्हणतोय अच्छा चालतंय की बघू तेव्हा येतो कधी म्हणलं तू ऑक्टोबर हा बोल
Medal Esports. क्यों? I am हाँ तो वॉच पार्टी चालू है माझी. Frostmines there, but at the end of the day, right, they were able to get हाँ the चलते. showstopper out, the orbital strike came out as well, so overall they're still winning out on the round completely because Metal, they had way too many ults going into this round, so it was very crucial for them. चलते ठीक है हाँ हाँ हाँ. To get as many of them out as well, but both of these teams now are on even ground unless you count the 2 to 4s coming in from Rockview. ये मैप नहीं देखा तो भी चलेगा. पिछला मैप जाके देखा मैंने पिछला मैप. बैकग्राउंड में चालू था. As the dimensional drift should be coming online if he gets a couple of kills. Don't forget, the dimensional drift is one of the few abilities in the game other than the Phoenix ult that has a pretty low cost, and it's gonna be Aussies who's gonna be costing the members of Metal a lot of pain. Because without that Viper, the take towards the A side is now even more difficult. You don't have the conditioning wall anymore that allows you to walk up in towards lamps for free. Oh. बाप रे. क्या बात है इजी भाई. He took down 2 players though and have denied the numbers for the sides of OG. Steadily Frostmite trying to make his way inside. Lamps control is what he is opting on to right now, but I think he'll be denied. क्या बात है इजी भाई. Converts the third one onto his name. He just makes it so easy for everyone who's gonna watch it out. But for now, मल्टीटास्कर बाबा. goes on to one last remaining player, Rawfuel. This is a 9-3 half coming up, ladies and gentlemen. जिम भी जाने का है. हरनिश पेलेगा मेरे को अगर मैं गया तो. सेकंड मैप भी नहीं किया. Now that they did tend to get the last 2 rounds, I feel if the same executions were done a bit early, it would have been a 8-4 or a 7-5 scoreline. Just maybe, right? It's all an hypothetical situation. I understand that we talk about, but yet if it would have been that half, it would be so much more interesting. Hi बड़ा पंखा. Hello Mahi. What's up? Welcome to stream. What you doing? Stream खत्म हो गया तुम्हारा? As I said, Aziz is having a perfect day today. He's able to do every single thing that he can. Now with the side switch coming up, 9-3. there might be few changes with the execution for the sides of Medal Esports. Down that they are Shower ले रहे. defensive half. Let's see if they are able to make those rounds count for themselves because it's going to be way too important. Showers completely denial of vision coming up. Paradox going in for a flash. 4B पे. But okay, he'll be instantly going back towards the A side. This is a split yet. I mean, look, the spike is down. They haven't yet decided on what side they going to go and make this execution work on to. They are yet waiting on the first initial frag and more information to rely. They are taking it way too slow. But for now, I feel this is a B execution. Little do they know that they are going to walk into 3 players straight up there aggressive. Easy ने हुक्का नहीं छोड़ना चाहिए. Position that you want to be in as Ezzy. 3 हुक्का 20 स्प्लिट है. He's looking for a little bit of an early fight, but he's not able to get out much just yet. Level of information, and it's gonna be one time. Aziz Gaming. He's completely stuck on an island. The nade was perfect, and they're able to deal a good chunk of damage over. क्या बात है? They still have it in them. The fights are good, and it seems as though it's like a complete repeat of what happened for the pistol run for. सही है बे. हाँ 15 मिनट्स पहले बंद किया. भूख लग गई. वाओ मैंने तो अभी जस्ट खाया. अभी खाया अभी करूँगा वाक पार्टी. Levels of problems for the players. Frostman's gonna be good for the 1 kill, but Blackhawk, the trade is simultaneous. 94 as Metal. They seem to be back in towards the game, but we cannot ever count the members of Orangutan out for even a second. Yep. They do seem to be in the game back again, but OG, I mean, more or less it is going to be a 9-5 scoreline that we do talk about until and unless it's one more thrifty aggressive that we've been watching all day long, right? Today's day and the map of Haven, to be precise, has been a story just about thrifties. But this time over to the execution again. It's going to be a execution coming up from these teams. 2 players towards the showers, 3 towards the main itself. More or less, if they are able to get down the batteries, it can be a great one. Though Rawfuel, he gets denied from Vim. He'll be able to get him down to 82 of his health, but that's all.
he could do. On the other side, I do see one player with the judge as well, so it's gonna be a bit difficult. The instant smoke, they do come up. There's two players inside the smoke. Wimp has been brought back to 100 though. Will they be able to find the picks out there? Yes, they are able to do that. It's gonna be Excali will be going in for that plant. Yep, the spike is planted. It's all about the retake. Paradox just comes out of lamps. Aaron Ready to judge players out there. घंटा भी पिकनिक है First one, आने दो मेरे लोंडो को फिर देते हैं ऐसा किया उसने a flawless round that we are talking about. No player loss, no weaponry loss whatsoever on the other side. OG, now this is gonna be their buy round. क्या खाया रोटी सब्जी खाई चपाती और गवार OG there, and it really just didn't help because Metal were just in full control, right? They had Paradox in the perfect position towards Slam, especially this judge is going to be an even bigger importance to them as soon as this buy round rolls around. नहीं बीच में आ जाता है भाई ये चालू It's going to be an even bigger importance to them as soon as this buy round rolls around too, because when you look at how OG have been playing, they like to take a lot of close range fights and लाइनअप बोलते लाइनअप लारी because from what I can tell, the way that Orangutan have been playing, they want to take these हेवन का लाइनअप है तो अरे बाप रे क्या डायरेक्ट धपाधप ए शॉट 5 जन I don't really like this whip. How are you playing this one through? Wait a minute, whip. अरे बाप रे तो दानवी है भाई ये पैरा But with all of the players now opting for rotation, they still have to worry about Ezzy on the back end of the side. अच्छा गावात ओई शॉप भाई ये जानवर है भाई ये बंदा Oh no, it's a travesty. They should have just stayed towards A. The rotation was too fast. ये काय को है टीपी में The teleporter to make a play, but it didn't work. Paradox, what did you just do? इम्मा कम स्टिल इट क्या Destruction. Annihilation. चप्पल और गवार चोरी करने का है And a lot of problems for OG. ओए बफ मिल रहा है मिडल को वही तो अभी उनको कौन बताएगा जब मैंने स्ट्रीम चालू की तब से ये लोग राउंड जीतने चालू किए एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक तो को समझता नहीं यार अपना पावर I mean, yeah, I am quick early when it goes down to me predicting some things, but it just happens that way. Every single time. 9-3 was the scoreline, ladies and gentlemen, that we were on to after the very first match, after the very first half itself. But right now, Metal Esports, they got the pistol, they got the entire eco, they got the bonus as well. And OG, they've been denied for a lot of things. This denial can just lead the sides of Metal Esports to close the gap and just take it to an equalizer if that's possible though. I mean, they need to deny one more buy round for the sides of OG and that's where they will be able to do that. खतरनाक है इनका It just can be another overtime. ये लोग ने रीड कर लिया इनका साला एक ही खेलता है ए पे Execution towards the A over and over again. Yes, that's going to be the case. Not good of an weaponry for the sides of OG, so they'll be respecting the decision. Hey, but wake up. Fuel. He's not yet done. Shuts down Vim for now and gets... बोलना अरे क्या बॉबी फाइमन नहीं नोटी जीजी नाम है उसका अरे वो चालू है ना व्हाट पार्टी या मैन तो बंद कर देना खेलो खेलो बाकी पब्लिक किधर गया Sound muted. बंद कर दो सीधा बोलते बंद करो बैंक The positioning seems to be so vulnerable for them. It's impossible for them even to go in and make their way towards the site itself. They'll be just going in for a save. Aggressive. Once again. I mean, once again a 10-6 scoreline coming in and a thrifty for OG. Thrifties are where pretty much all of this game is going to get played here. Antidote's going to be able to shut down Blackhawk too, so all the guns that they were trying to save, one of them is going to get dropped. And the economy for Metal is not going to be looking that good. For now though, I can already tell that OG, they are in full control once more back in the driver's seat as they have cleared out their minds. अगरासिव है कास्टिंग करता है ना भाई अगरासिव गेमिंग कंटिन्यू मुंह चालू रहता है भाई का कंटिन्यू इधर से इतने सब सोचते हैं क्या पता भाई
wall really doesn't help because your short is now completely isolated and in the open. Yeah. You deny showers, but short is just an angle that you're giving up for free. They can take this fight, and you need to have one of your players constantly playing towards lamp, and if he dies, once more, it's an isolated fight. You can't help him anymore from the back end of sight. True though. He cheated though. Medal Esports, they're taking it slow this time. On the same side, OG, so is the case with them. No one wants to go in for an over-aggression, over peaks, and just give away the information. No one wants to do that. But for now, with the Prowler coming up on the complete other side, they have a lot of information. But that's just the Fade making its way towards the A side, and now E execution was is Brimton. the case coming up from the side of OG. Yeah. Inside they have the side control. The reinforcement is definitely मर called, गए. but it will be a bit too late. As the spike is planted, what's happening? Paradox 3v3. shuts down Frostbind. One tap got Plant भी नहीं हुआ भाई. paint shells. रेस पे 4v3. बाप रे मारा Well, है. क्या बात है? now the spike is not yet planted. They need to go in for the plant. One tap got converts to 3k. पिक मत करो भाई. Shuts down easy, but he does not have the time to Nice walk nade. around with. The paint shell is going to deny him a lot of things out there. Might just go down to it now. He's still surviving. 34 ये मस्ती है ना and इसकी a dream. मुंड में. But still, Oish! player who's out there, raw fuel. He did manage to shut him down though, but time not being his best friend this round will be rewarded to the sides of Medal Esports. A 10-7. वो अगर रेस मरता ना One उधर tap got ही in this round has been really spam great. में. All the kills that he got onto his name. A 3k. The nades were perfect. He did try his level best फिर to गाली waste देते थे as दोनों much को. time as he can and to deny and delay the plant coming up for the sides of OG. And that's where everything seems to be falling down. 10-7, 3 more rounds of differentiate. For now, economically, OG, they do have weapons to buy. On the other side, so was the case with Medal. So this full buy around is going to decide a lot of things. One tap got onto that positioning. He's still present out there, even though they invested onto the orbital strike. For now, he will finally relocate himself, but Wimp is already done for. Medal Esports, they've lost 2 important players, and one tap god just joins the same party. Frostmind on the other side converts one onto Blackhawks, and slowly, steadily, this round can just be an 11-1 for OG. Medal Paradox पे. OG, they're the home stretch, and it's all up to Paradox to maybe pull off a miracle here. But I don't think miracles are gonna grow on trees, and that paint shell is gonna feed enough island nail on the top. Goodbye, Paradox. अटक गया मेरा बेचारा. He's not gonna let you live anytime सब soon. जगह जाके पेलेंगे उसको. Your ऐसा हो गया shenanigans उसका. are not gonna work against him. Not at least in this round. 11-7 is the scorecards as Blackhawk finally takes a pause to give his team a little bit of direction and a moment to calm themselves down. They went the distance here, mind you. It was a 9-3 scoreline. Now we're looking at 11-7. The members of Medal, they can pull this one off. 4 rounds, not really that big of a deal. But the question is, how are they going to get it? They do have the Dimensional Drift and the Showstopper to play around with. Information galore. Plus, I do believe that the Brim Orbital Strike should be coming online soon, as he did get a bunch of kills previously. So we're going to be... क्या ये गेम comeback है? So what's the answer from Medal? How much do they know? And how do they plan to use it after this timeout? Because I want them to take a lot more aggressive control. I want them to maybe establish a good link towards the B-long position, maybe place down a smoke early, take that fight, and just try to take away the control from the members of OG, because currently I do believe that OG is getting away with a lot more of these aggressive rushes because they are able to establish that control for free, and we don't see Medal really fighting for anything. They want to play reactive, they want to play on the basis of this double controller. It is good, it's not a bad idea, but double controller has a very specific weakness that if they're able to break through the utility, then you need to rely on your raw mechanical skill, which of course these players have, but that's a 50-50 duel that you can't always rely on, while you can always rely on your utility usage instead. Game sense is key for them, and hopefully the members of Medal, they have the right answer. They are taking heavy showers control to stop any players from pushing in, but with the Euro gate crash already on the opposite side, they just need a slight bit of information to give them the opening, and as soon as they hear the sound, it's going to be an instant teleport coming in from the players. Raw fuel for now.
The flash did hit him, but Aziz will be going in for the showstopper. This could boat one onto Wimpy, shuts down Blackhawk. The मुश्किल है body अभी just तो. fell down. But for now, Rocky, this position will be checked onto, and that's going to be one that he is able to deny, but that's all he could do. Vault है इनके पास. Comfortably, they will be going in towards the match point. Two remaining players, Medal Esports. What's the plan like? Do they anticipate Aziz being on that position? Yes, they do. Easy shuts him down though. But yet, is this round doable is the question. 2v3. Easy is definitely trying to go in and get some frags. But look at his teammate out there. I mean, not really sure on what the call looks like for both of them. But wait till late. One tap god tries to go in, gets denied for. And that's going to be a lot more problematic. Easy converts a 3k. But finally, Antidote shuts him down. And that's going to be a match point coming up for OG now. For Medal Esports, I'm not really sure on what the, strategy or the comms were like, because there was one player right towards the hookah who was trying to go in towards the side and maybe try it out to, maybe just give it a try, right, to get this round. But on the other side, you look where one tap Hey, got wake was. up. It was right towards their spawn. And then he slowly and steadily tried to make his way inside the site. It was a 3k, but that just did not change the fact that it's the match point for OG. Medal. They got so close to maybe getting another victory, but it seems not to be enough. Poor Rofio. He could have gotten it. There was a chance if that flash was just even a second later. But a rough position. I like this wall coming in from the members of Medal. They're able to establish aggressive shower control and still have an opportunity to go in for a duel. नमस्कार अभिषेक शिंदे काय म्हणतोस? Blackhawk just casually walks out, but काय म्हणतोस MBA शूटर? भाई इन पे फेड का अल्ट है. ये लोग Nightfall gets invested as they're going to be running in towards the side, but that again gets put to a वो लोग complete positions, not वॉल अप करके डायरेक्ट बाहर आ गया. दे दिया Blackhawk. He's in such a good spot to get a kill here. He's probably going to be able to get it, but no, Excali, how do you turn around and get that frag? अरे अल्ट क्यों मार रहा है? Excali over towards the top side. Paradox comes in with a dimensional drift to cause a little bit of damage towards him too. Excali's just gonna try to make a full run for it and maybe save his weapon or get a couple of kills. He's going through all the way from the back end of spawn. But is he? He's just holding down the angle. He knows what to expect. Excali's play. It's not expected है. देख रहे. अजीज. Look where he is. अजीज देख रहा. अजीज. What he's trying to do, Excali. Exit flag. He's trying to do that, but one tap god. अजीज नहीं. He anticipates Excali being there though. Even if he did try to make his way right towards these, गोपीदा के साथ स्कैम हो गया रे. Spawn maybe towards the side. He did not गोपी have enough पत्ता amount of उसके time to do मुंह पे आ that. गया. The plan was good though, but the positions were checked onto, and time not being the best friend, I guess there was a lot of restrictions coming in the previous round for the sides of OG. But Medal Esports, they haven't given up yet. I mean, look, right now they even have two important ultimates to work around with, the Showstopper, and alongside that, to accompany it, it's going to be the Viper's Pit as well. So they do have a lot to work around with. They will be taking the early A control for themselves with the Viper, investing onto the Viper's Pit and a shorty in the hand on the other side. Forcing the fight towards the A side, it's going to be way too difficult. Now, they can make their way towards the Shahs maybe and try to take the Shahs control and then deny the Viper. But will that be allowed to is the question, because this Sky Util is going to give them a lot of information to work around with. One tap card has the best out position there. I mean, has the best position out there, standing right on top of the box and has कदम क्या बात है? ओए इसका HP कैसे नहीं गया? He had a chance to convert more though, but as he shuts him down instantly, that's a trade happening. But still, the Viper is inside the Viper's pit. Paradox gets taken down, and now it's all down to Raw Fuel to shut down Wimp if he is able to do that. Excali will be going in for the plan. They have the side. शॉट मारे तो क्या हुआ? हम लोग शॉर से जाएंगे, but A जाएंगे. ऐसा हो गया. Maybe the fourth one. Oh no. It was him on a reload. Medal Esports with one last remaining player. It's done for more or less. So the force being activated, but Blackhawk still converts one. Excali just waiting for that right opportunity. Puts the last nail into the coffin, ladies and gentlemen. 13-8, and that's where OG they get the second one on board in this best of 5 series.
अबे कितना ऊपर से गिर इसके एचपी से नहीं है knew that OG were going to be the ones to take this map, चूतिया but गेम Metal, they put up a really good fight. It seems as though right at the very end, when their backs are against the wall, the team is really able to perform. And you can see the weaknesses that they have when it comes down to their attack side is a little bit too glaring. They really need to work up on those and push up, because GGWP if they got a good bunch of rounds when it came down to the attack side, they had a pretty good chance of दोस्तों क्या बोलते हो well. क्या लगता है तुम लोग का प्रेडिक्शन कौन जीतेगा Pretty good, but when OG started to adapt, the members of Metal, they needed a bit of time to just try and figure things out. 1 or 3 rounds is what they required, but the luxury was just not given to them. When you're on a 9-3 scoreline, pretty much 1 round loss means a massive momentum gain for your opponents, and if they're able to get ultimates upon that, they're just not going to be able to win. And you can see that the strengths of the ultimates on the map of Vine really showing for the members of OG. Direction and planning is key for them, and map control working out beautifully. Excali as well performed admirably all the way up till the very end. This guy pretty much was at the bottom of the barrel yesterday, but today he's the peak of डेंजर है यार पब्लिक फुल खतरनाक है भाई no matter what happens, Excali is able to find these trades, and the trades are where he shines the most. He doesn't need to entry, he just sets up his team, and if they need to be traded, Excali is always there to present it to his squad. That is the beauty of OG right now, and that is the consistency. अरे तो एंकी शॉट से तो कास्टर है ना आइला कुछ तो लफड़ा हो गया इसका शायद आइला बने यार second map of Lotus. I'm pretty sure that Metal, now it's their turn to turn things around. This is their map. They're gonna be a lot more confident here. They have strategies to do so, and that confidence should carry well for them. ये सब भी बोलना है उनका स्ट्रीम भी देखना है We know that the members of OG, they're not that proficient on this map, but that doesn't mean that they can't put up a good fight. All depends on who has the better mental strength now. This is a marathon, and your energy needs to be running high. If you even slow down for a second, either if you're Metal or you're OG, you know that your opponents, they're gonna jump on that opportunity. Way too true, though. It's you know, OG does have a map advantage in terms of the overall scoreline. If I talk about it, it's a 2-1 in favor of OG right now, but it's still a do or die situation for both of them, because you know, if OG does not get this map for themselves and end it here, they are gonna go further and force the map of Breeze. डेंजर है भाई अपनी ऑडियंस Previous time, we saw OG on the map of Breeze itself. It was up against the sides of True Rippers, and that's the reason right now they are facing the sides of Metal. So forcing Breeze can be a bit vulnerable for them. And at the same time, if I talk about Metal esports, I mean, it's pretty clear if they do not get it, it's done for, and it's gonna be OG who wins this. Metal will be saying us a goodbye, and we'll be having True Rippers versus OG in the grand finals. But for now, scoreline is what we are on to. The scoreboard is what we are on to, ladies and gentlemen. Aziz with 26. Over and over again, this has been that one player who's been so consistent. Every single time. In the previous match, back to that as well. He's just been so consistent with the amount of kills he has. The fragging potential that this man has is something on a different level. 26, a 360, 4 of an ACS with 6 first bloods onto his name. On the other side, it's got to be one tap god this time on top with 16 kills as well. The double duelist combination, I mean, we do expect it to be working wonders when it comes down to the attacking side itself, but it just did not give them the output. It just did not. It all went down to a complete one-sided domination in the first half itself. I mean, the scoreline went down to a, what, 9-3. In the second half, yes, I have to give it to the players of Metal out there. They did try their level best. They put in all the strategies that they had, and they got it to a 13-8, but that wasn't enough. There were mistakes being committed every single time. Coming down to Aziz over and over again. 32% of an headshot to be maintained. I mean, come on, I don't even need to talk about his strats anymore. He's just proving it with the amount of flags that he's having for himself, the duels that he's taking, and his confidence. Yeah, confidence is key, and Aziz, his confidence is just through the roof when it comes down to stuff like this. We're going to be heading on down over into a short little break, ladies and gentlemen, and we'll be right back with a lot more action. So don't go anywhere. The map of Lotus is going to be underway pretty soon. Okay, I'm gonna see you. Bye.
राउंड भी यार बहुत डेंजर हो गया, रॉफी ने बहुत डेंजर मारे इधर। कोई भी कॉल नहीं उठा रहा भाई मेरा। जी जी। चलो दोस्तों फिर अपन चलते हैं शायद, नहीं क्या क्या बोलते हो, अपने को चलना चाहिए शायद। चलो बाय बाय टाटा सी एच केयर बाय, मिलते हैं कल धापाधप गेमिंग के साथ, समझ रहे हो, एकदम धापाधप लपालप सपासप सटासट। बाय टाटा सी एच केयर बाय।